3.5 lakh rupees for editing one video. पैसा ही पैसा होगा। तो तुम्हें एक हफ्ते में ऑर्डर आ जाएगा एंड यू स्टार्ट अर्निंग। नहीं होगा, सीधा सीधा बताएंगे, नहीं होगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Good evening, everyone. I, Sarbjot Singh, with my co-host Arshita Prakhar, welcome you all to this wonderful session on Kickstart Your Freelance Journey from Scratch, which is organized by Knowledge Catalyst. Do you know, guys, Knowledge Catalyst? It is a student community now in 40 plus colleges, over 3,000 members. Here at Knowledge Catalyst, we focus on practical knowledge rather than theoretical. Also, the skills are valued in companies, but the college is focused only on cramming and passing the exam. So, to stand the need of companies, we focus on developing on skills of our community and members. Now, to tell you more about Knowledge Catalyst, my co-host will help you. Good evening, everyone. I, Ashita Prakhar, welcome you all to this event. We have 6 domains which are development, designing, non-tech, cyber security, coding, and as well as modern technology. We have 5 clubs also: gaming club, music and movies club, and fitness healthy club, and entrepreneur club, and as well as readers club. So, guys, we will share a feedback form. Do check it out. Whoever fills this feedback form will get a certificate from Knowledge Catalyst. And It will so, be without yeah, continue, please. it will be good for your future goals. It will help you out for your future things. So you should we need your feedback because your feedback is very necessary for us. It shows how much you get understood by this session. So, guys, without wasting any more time, so let me introduce you to our guests. Our first speaker, Shivay Madan. He's a marketing strategist, level 2 on Fiverr, worked with Fortune 500 unicorn startups, multi-million dollar e-commerce stores. And our second guest, Prakhar Mehta. He's a filmmaker and a video editor. Top rated freelancer on Upwork, level 2 seller and Fiverr's choice on Fiverr. He has also worked with multiple YouTube channels with over million subscribers. So let's welcome our guests. Hello everyone. Hello, I am Prakhar. As they've told you, my basic introduction. We are excited to share with you about freelancing. We'll be covering everything today, from basics to telling you how to start and how to sustain a freelancing business for your future. Shivai? Yeah, so exactly a lot of the people here would be beginners. So you might all have doubts कि वो freelancing होती क्या है या फिर how to get a first client. Can we actually earn money? Can we actually start us? This is a side hustle or can we take it full time? ऐसे बहुत सारे doubts है which we came across and we are here to solve them all for you. So this workshop would be completely beginner friendly, covering from basics on how you can actually start, scale, and actually learn the skills, what you should actually do, and we'll be sharing our own experiences for the past 2 years. So just a quick intro about me, apart from what Sabjot said. So hey, I am Shivay. I am a third year undergrad at Delhi Technological University. I live here in Delhi, and I have been a marketing strategist, and I've worked with over 100 plus brands that include a lot of niches. So I have worked mainly on Fiverr, but I have recently started on platforms like Upwork as well, and I have tried LinkedIn and cold email and referrals as well to generate leads for my freelance business. So I help people with email marketing, social media marketing, landing page design, copywriting, and all these services. So that's just a brief about me, and now we'll be starting. Prakhar, anything?
Also, you guys are free to check out our Instagram IDs. We also post tips about freelancing, as well as if all the people who are interested in filmmaking or video editing, I post about that too. And Shivai posts a lot about marketing as well on his Instagram ID. Yeah, do check it out. So let's get started with our presentation. Next slide. Who's controlling? Sajjod? Yes, yes, sir. I am controlling. Yeah. Yeah, so first of all, a notice before we begin. All these slides will just have a headline on them. We'll be going a lot in detail by just speaking. So if you are really serious about it, I would recommend that you can go and grab a notebook and a pen so that you make notes. I guess they would be sharing the recording, but we'll be sharing a lot of knowledge, lot of our experiences, lot of our mistakes, and there would be nothing on the PPT so that you can't take that you can take screenshots and save them. So I recommend having a book and a pen. So, meanwhile you're grabbing, I'll start with what is freelancing actually. Nothing to keep it actually simple. Freelancing is just you are working independently with a contract. You are a contractor and you work independently with a client for some of your service-based businesses. So basically, you are here a service provider. You work on your own terms. तुम्हारे पे you don't have any permit. You don't have to take any permission from anyone that you need to work from here and then. You are fully flexible. तुम अपने खुद के बॉस होते हो, and that's the real fact. And more important than boss, you get that freedom to work on your own terms. That's the best part about freelancing, which I have personally felt in the past 2 years. Now, when you start with freelancing, we all feel like it is so hard to stand out, how you can actually get there. We'll all be answering all these questions on how you can actually stand out and how you can actually grab your next client within a month or so. We'll be sharing all our strategies. So that's all you need to know about freelancing. Prakhar, do you want to add anything? No, no, no. Go on, go on. Yeah. So next slide. Now, the main question is कि everybody is doing a lot of people try coding, a lot of people are into studies, a lot of people might go for future studies. Like I'm guessing a lot of people here are probably first years and second years in their college, and we personally are in third year. So why you should explore freelancing? What does freelancing actually provide you? Already said, it's freedom, and obviously the second part is money. The fun fact about freelancing is कि तुम जितना काम करोगे ना, जितना the more you work hard, the more money you will generate and the more thinking and the mindset you will have towards freedom. So I believe a lot of I believe freelancing is the first step to your entrepreneurship journey. If you really want to start up, if you really want to go on there, if you really have an idea, I would recommend you should start freelancing as well side by side. You as a startup founder, you would obviously have some skills, be it marketing, be it design, be it coding. You would be a tech. You can actually use that skill to freelance somewhere, earn some money, so that you can actually actually have some funds for your startup when you start. So the beauty about freelancing is all about freedom, the money you get, and the decisions you are capable to make of. As freelancer in college, you'll get a lot of independence. So just putting it straight, प्रखर और मैंने अपने थर्ड ईयर की internships attend नहीं करी. Not just because ki this is a good thing and we were independent and all. It's just because we had the freedom to explore. We had already had our interests in video editing and marketing respectively, and we felt like कि engineering colleges में जो coding आती, we can do better in other fields like design and all. So we left our internships, and those internships were probably from big tech companies. They were big four, they were FANG companies. We didn't even study from them. Prakhar being from COE, he even left them all. So that's the freedom and that risk capability you get when you are started with freelancing. So all these positives makes me tell you that you should actually explore. मैं ये नहीं कह रहा कि यार तुम पूरा full time जाओ, तुम बस freelance करो, यही है. But there is this one thing I believe of first project effect. कि जब तुम अपना पहला प्रोजेक्ट करोगे ना, and when once you make your first dollar online, you will feel that happiness, you will feel that dopamine rush कि यार ये तो और करना है, and you will work harder. And this is not a scam like affiliate marketing जहाँ तुम 10,000 रुपए का कोई कोर्स इन्वेस्ट करोगे फिर तुम्हें फेसबुक ग्रुप्स पे जाना है. It's literally you are a service provider. You're helping out clients with your skills that you have learned, and you're gaining money out of it. So these are all the reasons why you should actually explore freelancing, especially in college, क्योंकि तुम्हारे पास risk appetite और risk capability बहुत ज़्यादा है.
So this is not something I'd recommend anyone to miss out. At least once, try it. Yeah. Yeah, like Shivay said, see, in freelancing, you have freedom over your time. You have freedom over your growth. You have freedom over your money. You can control how much money you want to make. You can work according to that. You can control how much you want to work. As for, I can work 2 hours today and I can work 8 hours tomorrow. That's upon me. Then I'll tell you an example. I and Shivai took a trip to Goa in the starting of the year, and we had so much freedom. We worked on our flight because we were like just chilling out there and working. We went to Manali, we were working from the mountains. See, there's freedom in everything when it comes to freelancing. So that's why we're saying just once in your lifetime or in your college time, when you get one skill, do give it a try, because I'm sure, like Shivai said, when you make your first payment online, when you first get paid online, you'll feel on a very different level, very different level. That's the rush. Even when you try an internship and you get your stipend, you will feel that rush of getting your first money, being a college student who have just left 12th. So if you're someone who hasn't explored, do give it a try, and we'll tell you how you can actually start. And I think college would be the best time to do freelancing or start freelancing, because you have the like it's the optimum time to start freelancing, because when you were earlier than this, you were like studying for your competitive exams. After that, you'll have your internships, placements, and then you'll go for a job or anything. But within like college, you have so much exposure, you have so much time on your hands, and with everything being online now, you have a lot of more, even more time. So yeah, that's about freelancing. Okay, can we go to the next slide? Okay, so when you start freelancing, the first question that comes it, what skill to start with, how to pick a skill. So I think many of you people already have a skill that you like work on or you have an interest in. For some of you, it could be video editing. For some of you, it could be graphic designing. For some of you, it could be photography or like web development, app development. There could be a lot of things. If you already have a skill in your mind that you know that you're interested in, then it's very easy for you to start, because you already know. For the people who don't know anything, if they're blank, first I'll recommend you and I'll want you to go explore things. See what all fields are there in the freelancing market right now. See what skills you want to work with, what skills you enjoy. And something to do here could be go to this website called fiverr.com, Fiverr, fiverr.com. When you go to the skills section there, you'll see a lot of skills mentioned there. Go to that section, make a list on a paper of all the skills that interest you, and then see what would be the first skill that you think would like you'd love to like explore that, and start with that. Also, I and Shiv, I have one more formula. Subjot, can you go to the next slide? Okay, so this is a very simple formula. When you decide a skill, your ideal skill would be a perfect combination of, first is what you love. Like I told, any skill that you choose, it should be something that you love doing. For example, take me. I can edit videos for 4 hours, 6 hours, 12 hours a day, and I'll still be like, ठीक है, I'm enjoying it. But अगर मुझे वो नहीं होगा तो I'll basically get a burnout, और मतलब मैं वो sustainable नहीं होगा. So first thing you'll have to see is the skill that you start with should be something that you should really enjoy and love. The second thing is market demand. Obviously, if you're going into the freelancing world, if you're like going to into the workspace and everything, this there should be a demand for the skill that you want to go for. If there's no demand for the skill, then obviously it's baseless to like work on that and put in so much efforts. The third is what you can be paid to do. Obviously the skill that you choose should be something that you have to be paid for, if that's something that you want to make sustainable in the future. Might be that I love gaming and people love to see gaming, but if I'm not getting paid for it, I cannot like sit for 6 hours every day and play games and then think that yeah, I'm doing something productive. Because
There should be a combination of all these three things. Can we go to the next slide? Okay, so one more thing to like keep in mind when it comes to choosing a skill is the life cycle of a skill. uh, it's very simple. Don't go with the graph, just listen to me. It's very simple. When you choose a skill, you have to see that way which, like, the time of the skill that you going in for that. For example, web development, we'll take an example of web development. Web development was very like, people didn't adopt making websites and everything few years back, as in around 2010 or 2011. You couldn't see a lot of websites out there. Then came the acceptance stage when people started to know about websites and how they can help them. So around like 2000, after like 3 to 4 years, then that people started accepting that, and brands got their own websites. Like, startups got their own websites and everything. Now is would be the peak popularity for web development. With COVID also coming up, even small stores have their own websites. I, as a freelancer, have my own website, so everyone has their own website. So now like the web development field could be something where everyone is like peaking on the peak. But there will come a time when this skill will go down. Why? Okay, so because people used to first code in like HTML and CSS to make a website. Could have taken them days to like write a code for their website to customize everything. But now people use WordPress. You could just go take a theme, put it in your website, and just customize some things, and you'll be done. And I can bet you within 3 to 4 years, there's going to be a software that will just make a website for you within a few clicks based on your like preferences, and fully customized according to you. There might be some software out right now even. But when that happens, when automation happens, for example, people used to have virtual assistants back then. People still have virtual assistants, but they're paid a little less now. But because there are so many like tools right now, for example, Zapier, there are so many tools that have already automated that work. People don't necessarily need virtual assistants anymore, because those tools do all the work for them already. So when you choose a skill, you have to keep this in mind. If you're going into early adoption stage or acceptance stage, then obviously it will be very fine for you. Even if you're going into the peak stage, then also it's not a problem for you, because there's going to be a lot of crowd. For sure, there's going to be a lot of crowd, and your competition would be much larger. But you could obviously find things there, because the demand is also higher if like the people are more to work on that. So that's some things that we think should you consider while choosing a skill if you're like starting right now. Sure, anything you want to add to it? Yeah, I would add a couple of points here regarding, first of all, for the life cycle of a skill. So as we see, the idea here is not to fight the automation. So as we know, GPT-3 is already launched. A lot of softwares are already using AI to generate copies. Now a lot of content writers and copywriters would feel scared कि नहीं यार, this is something that would take our job. But actually you can use that AI to help yourself gain more ideas and be a better copywriter. That's the first example. Now for the designing perspectives, there are a lot of software, AI software, जिसमें ना तुम सिर्फ माउंटेन्स की आउटलाइन बना दो, वहाँ पे कलर ब्राउन लिख दो और नीचे लैंड बना दो, and it will create a beautiful design, a beautiful artwork of that a beautiful artwork or a beautiful illustration. And that's happening. This is the reality. Now either you have two options: either you can actually be against and तुम डर जाओ and you feel like yeah, I'm going to be homeless, or the other thing is you use that AI to help yourself be more creative, because AI भी humans ने develop करा है. So even if you're a अगर तुम marketing automation is, if you're feeling that marketing automation can replace you, for example Zapier, as Prakhar said, you can actually use become an automation specialist, marketing automation specialist, and use those automation stuff to help other clients. Because यार उस automation में ये नहीं है कि if a Gmail account is coming directly
directly fill it into an Excel sheet. There are a lot of flows, there are a lot of funnels, there are a lot of zaps that need to be accomplished there. So you can actually be a pro there. So it's not like that automation would come and tomorrow कोई websites बनाएगा नहीं. There will be an advanced way. Our point of concentrating here is that you need to learn on the go as well. It's not like कि तुमने आज एक साल में skill learn कर ली and then you won't be learning. You need to constantly upgrade yourself, upskill yourself on the way, so that you can actually be a part of automation and not fight automation. So that's the first part. Regarding skills on how you can actually learn about it, that या तुम्हें skills learn करनी चाहिए. जैसे मैं वो अगर मुझे graphic designing सीखनी है और मुझे Photoshop पे सीखनी है. So there are two ways of learning. One is passive learning and the second one is active learning. Passive learning क्या हुआ कि तुम बस गए, तुमने YouTube पे वीडियोस खोली, Photoshop ट्यूटोरियल्स, और तुम उसको बस देखे जा रहे हो. इसको ऐसे करते हैं, इसमें ये इफेक्ट लगाते हैं, वीडियो एडिटिंग में हम इसको ऐसे ट्रिम करते हैं. That's all you did, and you feel कि तुम्हें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है. You didn't practically apply it. The second and the smarter and the faster way to learn a skill is through active learning. What you actually do in it, what I personally did to learn video editing basics, I personally don't like video editing, मुझसे नहीं हो पाती, I have given up on it. But I tried to learn it 2 to 3 times, and here's how I did it. मैंने YouTube के tutorials देखे, actually मैंने Skillshare के tutorials देखे और YouTube के tutorials देखे, और मैंने उसको बस ऊपर ऊपर से देखे कि that's how you transition, that's how you film. And मेरे को बस एक आइडिया लग गया कि that's a layout, यहाँ से फाइल खुलती है, यहाँ से वीडियो अपलोड करती है. I am an absolute beginner. मैं पहली बार Premiere Pro खोल रहा हूँ. I opened the Premiere Pro and I just took some stock footages from internet and मैं उसको खुद ही एडिट कर रहा हूँ. I'm just exploring options, trimming, and उसी से मैं काफी कुछ सीख रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रांजिशन आ सकता है, यहाँ से की पॉइंट आ सकती है, बहुत कुछ होता है. तो प्रखर knows a lot about it, but I don't have any idea. That's how I started with UI design as well. That's how I started with copywriting as well. Over the time, I have learned a bunch of skills that have helped me where I am. And I believe active learning has been my way to go. And बहुत बारी तो ऐसा हुआ है that I don't know a skill, I don't know how to develop a WordPress website. I still took the order and then learned it on a go. So actually, someone paid me to learn that skill. I told them that you can have confidence on me since I have already helped you with social media marketing, and now I can help you with WordPress website. So he trusted me, and I upsold himself that service, and I learned it on the go, and I as well earned money from it. So that's how you can actually do it once you go ahead with your career. The second part I would like to cover is कि हम यहाँ पे सब है मार्केटिंग में, सबने सुना है कि यार FB एड्स कर लो, कॉपीराइटिंग कर लो. हम सब ने वो रील्स और यूट्यूब वीडियोस देखी कि जहाँ पे कहते हैं 6 skills to make over 1 lakh per month. Trust me, don't get hit by shiny object syndrome. मैं उसमें रह चुका हूँ, that I have went explored कि भाई ये करना है, ये करना है, वो करना है. कुछ नहीं होता है उससे. Just be clear of what you want. और अगर सपोज तुमने डिसाइड कर लिया ना कि वीडियो एडिटिंग तुम्हें करनी है या तुम्हें मार्केटिंग करनी है, उसी पे रहो 2-3 महीने तक. जरूरी नहीं है कि वो स्किल तुम्हारे लिए है, बट 2-3 महीने तक उससे प्रैक्टिस करो. अगर 2-3 महीने ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 1 महीने मिनिमम उससे प्रैक्टिस करो. ट्राई टू फाइंड क्लाइंट्स फ्रॉम इट, ट्राई टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, बिल्ड और वर्क ऑन डेमो प्रोजेक्ट्स, ताकि तुम एक्चुअली एक्सप्लोर तो कर पाओ कि दिस स्किल इज फॉर यू और नॉट. मैंने भी I haven't still figured out that what I love. I love marketing, but I love design as well, and I love copywriting as well. So I have a mixture of both three. प्रखर का भी अपना इंटरेस्ट है. अपार्ट फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, he has been a social media marketer as well. He has helped clients with email marketing as well, and he has run Google and Facebook ads as well. So he has also been a generalist at that point. So this is the stuff की बस भागो मत. once you learn a complete skill, then upskill yourself. what I actually feel कि beginner सबसे बड़ी गलती करते हैं, गिव अप है, कि वो एक रील देख लेते हैं या कोई यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं कि 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, 4 ये फेसबुक एड्स, लीड जनरेशन और ये कर लेंगे, तीनों में हाथ मारेंगे. They don't get good at any of it, and they just give up. And that's not how you should do. You should actually be consistent. Burnout होने दो अपने आप को, extend करो अपनी boundaries, but just go about it. Just don't give up. क्योंकि I have personally been there and I have struggled, so that's why I'm telling you after 5 to 6 months कि how I actually overcame it, so that it can help you and you don't waste your couple of months there. Yeah, that's all about from me regarding skills. Yeah, so like when we say this is what you have to like keep in mind while choosing a skill, mind that when choosing a skill, will that's what is going to be a starting point when you get into freelancing. It's not that you have to stick. For example, if I went into video editing, it's not that I have to like now, if
I have a business in that. It's not like कि अब मेरे को video editing ही करनी है पूरी जिंदगी. I've tried a lot of things as well. So you have to keep exploring, but this is just a good idea to when you start freelancing, when you're a complete beginner, तो जब तुम first skill अपनी choose कर रहे हो, उसके लिए ये तुम्हें help करेगा कि तुम first skill कब जा रहे हो. उसके बाद you'll keep exploring, cause ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें 2 महीने ही है और तुम्हें सब कुछ करना है. तुम 2 महीने वीडियो एडिटिंग करो, देखो कैसा जा रहा है, क्लाइंट्स कैसे आ रहे हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा स्केल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा. If you find something, because when you get into the freelancing space, trust me, you'll meet a lot of new people. They'll tell you a lot of different things. और मतलब हम भी इतना लोगों से मिलते थे, कुछ भी करते थे, तो हमें इतना मतलब नया नया पर्सपेक्टिव मिलता था ना हर रोज. हमें जैसे शिवाय ने बोला, उसकी वजह से ये भी होता है कि अरे यार चलो आज ये भी ट्राई करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं. बट अब हमने सीख लिया कि कैसे एक्सप्लोर करना है चीजों को. एक चीज ली, उसको ट्राई दिया, अच्छे से ट्राई दिया, देखा कि क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके अराउंड, फिर दूसरी चीज पे गए. बट एक ही बिल्कुल. स्किल पे स्टैग्नेंट भी नहीं होना, बट ऐसा भी नहीं कि तुम जंप ही करते रह जाओ. Yeah. So ओके. just be disciplined and clear when you pick up a skill. एक बार देख लो सारी स्किल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, वीडियो एडिटिंग क्या होती है, डिजाइनिंग क्या होती है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, एसक्यूएल क्वेरीज रन करना क्या होता है. सारी स्किल्स देख लो, वो तुम्हें भी पता है कि स्किल्स इज जस्ट वन गूगल सर्च अवे, कि डिजिटल स्किल्स क्या है. उसके बाद व्हेन यू हैव डिसाइड अपॉन इट, बी डिसिप्लिन्ड फॉर द फर्स्ट 2 to 3 months. मजा नहीं आ रहा, छोड़ो. You haven't wasted any time. You have just learned from it and you will use that experiences back. So yeah, that's all. Okay, can we go to the Next next slide? slide. Okay, so the next question, when, okay, so now you know what freelancing is, how we can start with freelancing, well, how to choose a skill. Now you know, okay, for example, if you are a web developer, you know that I want to do web development. Or if you're a video editor, you know how that I want to edit videos. Now comes the question, how to start and what to do with, how to give the proof of work to anyone that you want to like work for. So when we started, okay, I'll tell you how I started. So it's not that I wanted to like do video editing or something like from so on or anything. To be honest, I had this college fest, and there was a society, not a society, there was a team of digital media team, and they wanted video editors. I knew one or two software, and I knew the basics of how to do video editing. I just wanted to socialize in college. That was my only reason, and I went into that team. Okay, and I edited a few videos for that fest, so that gave me some exposure. एंड दैट ऑल्सो लाइक मेरे को उससे ये भी हेल्प हुआ कि मेरे को सारा स्किल सीखने में भी हेल्प हुआ. आई सोशलाइज एंड देन आई ऑल्सो गॉट प्रूफ ऑफ वर्क. सो हाउ डिड आई स्टार्ट? जब लॉकडाउन में वी वर जस्ट स्टार्टिंग, सो व्हाट वी डिड वाज, first is freelancing platforms. Okay, so like Shivay told, there are two freelancing platforms that we've used and we've experienced, so we can like tell you about them. Are Upwork and Fiverr. Those are the two platforms that we choose. So when you go on those platforms, even they would ask you for something, that something you'll have to show to your clients and everything. Obviously, a lot of you people would have like, I know video editing, you want to do video editing, but you don't have something to show to your clients. But obviously, when you go to someone and want to work from them, they'll want something from you that they can see and trust you with. So for example, if you're a video editor, you need to edit some videos, even if it's not for some client or a professional work. Just take some videos from the internet and edit them, do a good montage or something like that, and show it to your client. If you're a marketer, you'll have to show something, like learn something. Then maybe for example, you all guys are in college, for example, so there are a lot of societies you could work for them, and then you'll get to learn those skills as well as you'll get your proof of work. So the first thing when you have chosen a skill is to get some proof of work that you can show to your clients. Sure, what would you add to it? Yeah, so just to like brief them up, तुम 3 तरीके से अपने काम पे कर सकते हो. फर्स्ट इज अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स. देखो, वी नो दैट वी आर लिविंग इन अ स्टार्टअप इकोनॉमी एंड द गिग इकोनॉमी एज वेल. तो स्टार्टअप्स बहुत सारे आ रहे हैं. एवरी कॉलेज स्टूडेंट इज स्टार्टिंग, एंड इवन टॉप लेवल
people are starting. What I recommend is कि बहुत सारे जो starting startups हैं intern दें. अगर if you want to start with content writing, start with a content writing intern. Practice there. लिखो वहाँ पे 1 महीना काम करो, 2 महीना काम करो. Paid internship होगी तो अच्छी बात है. अगर free internship है तो 1 महीने में करके छोड़ दो. That's what I said. That's what I said to someone else as well. कि फ्री इंटर्नशिप है, अनपेड इंटर्नशिप है, सो आई डोंट रियली वांट टू वर्क देयर. तो मैंने बोला 1 महीना काम करो, एक्सपीरियंस लो और छोड़ दो. मतलब आई एम जस्ट कीपिंग 1 to 1. उनको उनसे भी ऑनेस्ट हो that I'm just here for experience and if it's unpaid I like to just work for 1 month and just leave. उस काम को अपना पोर्टफोलियो बनाओ. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज कि यार अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे तुम काम कर सकते हो. इफ यू आर इनटू डिजाइनिंग गो फॉर 30 डिजाइन चैलेंज. इफ यू आर इनटू वीडियो एडिटिंग गो फॉर अ 30 वीडियो एडिटिंग. इफ यू आर इनटू मार्केटिंग खुद का एक इंस्टाग्राम पेज करो, उसके लिए सोशल मीडिया डिजाइन, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी डिजाइन करो. ईमेल मार्केटिंग में जाना है तो कुछ उसके अराउंड सोचो. सो दैट्स हाउ यू कैन build on personal projects and how you can actually practice them. Third is be honest with your clients and work for free. And this literally happens with people who are interested in marketing. So if you're someone who's interested into Facebook ads, if you're a Google ads, if you want to go in performance marketing, वहाँ पे होता क्या है कि you are playing with someone else's money and helping them generate leads. Now there is a risk factor कि पहले वो ads पे भी खर्चेगा और फिर तेरे पे भी तुम्हारे पे भी खर्चेगा और अगर तुमसे result नहीं आया so that's basically दोनों का loss हुआ है. So what you can actually do is work for free, generate leads from there, and trust me, if you are able to generate leads from the first client in performance marketing, I mean Facebook ads या Instagram ads, you can actually use as a testimonial and pitch that to the client. क्योंकि अगर एक बार तुम्हारे results आ गए ना, you can use that multiple times to pitch that client in the same niche. तो suppose अगर मैंने किसी स्टार्टअप की जो हेल्थ सेक्टर में है उसकी हेल्प करी टू हेल्प विद उसको लीड जनरेट करने में हेल्प करी फॉर पेशेंट्स जो जिनको डाइटिंग में हेल्प चाहिए. सपोज मैंने एक बार हेल्प कर दी, ही गॉट अ गुड बंच ऑफ लीड्स एट अ वेरी गुड कॉस्ट. अब मैं वही डेटा को, वही केस स्टडी को, किस टाइप के मैंने एड्स रन करे, किस टाइप का क्या किया, उसको केस स्टडी में फॉर्म करूंगा. एंड केस स्टडी फॉर्म करना कुछ नहीं होता. केस स्टडी इज जस्ट लाइक तुम्हें डॉक्यूमेंट करा है तुमने क्या करा है. एंड तुम अदर हेल्थ फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट और स्टार्टअप्स को पिच कर सकते हो कि मैंने फेसबुक एड से करा. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू दैट, तुम शायद 1-2 महीने में पर मंथ 1 लाख रुपए कमा रहे होगे इफ यू डू दैट वेल विद योर फर्स्ट क्लाइंट. तो दैट्स व्हाट आई ट्राइड विद माय फेसबुक एड्स एज वेल. मैंने एक ब्यूटी पार्लर बेस्ड इन यूएस, सो देयर आर सर्विस बेस्ड बिजनेसेस देयर, उनको मैंने हेल्प करी टू जनरेट लीड्स टू गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स बैक देन इन दिसंबर. And uske baad I was able to pitch a lot of clients. So that's how I worked for free and then I generated income for myself. और बेस्ट पार्ट ये कि अगर तुम फ्री पे काम करोगे ना, द पर्सन इज सो डिलाइटेड दे एक्चुअली पे यू. फर्स्ट पॉइंट, अगर तुम एक्चुअली रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो. दूसरा, डोंट फॉरगेट टू टेक अ क्लाइंट टेस्टिमोनियल फ्रॉम देयर. फ्रीलांसिंग में ना तुम्हें लगेगा कि टेस्टिमोनियल तो तुम्हारा कोई दोस्त भी दे देगा, बट गुड क्लाइंट्स हु पे यू गुड एक्चुअली चेक कि टेस्टिमोनियल्स है या नहीं है, अच्छे मतलब वेरीफाइड टेस्टिमोनियल्स है या नहीं है. Testimonials are everything. Social proof you get, whether it's on platforms, whether are you cold emailing, whether it's LinkedIn. अगर तुम्हारे पास client testimonials है, if you have a case study as well, you have done this, you have proved work. And this is not for marketing, even for video editing and design. If you can produce good aesthetic designs, if you can produce the videos your client wants, you have got to go in freelancing. फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता. It's freelancing में तुम्हारी ना डिग्री काम आती है, ना सर्टिफिकेट काम आता है, कुछ नहीं काम आता है. It's just the social proof from your client. Nobody cares कि तुम किस लैंग्वेज में बोलते हो, तुम 18 साल के हो, तुम 12 साल के हो, तुम 25 साल के हो, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. All what they care is can you produce results for them or have you produced results previously. This is all the flat line for freelancing. 2 साल हो गए मुझे मार्केटिंग में, मेरे पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने कोई कोर्स नहीं करा, कुछ नहीं करा. आई हैव डन अ कोहॉर्ट बेस्ड कोर्सेज बट उसमें कभी सर्टिफिकेट नहीं मिलता. यू कम आउट विद प्रैक्टिकल लर्निंग देयर. सो अब प्रखर ने भी पर्सनली आई डोंट थिंक सो उसने कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स करा है. ऑल ही हैज मतलब कभी यूट्यूब वीडियो से कुछ सीखना हुआ एंड दैट्स डिफरेंट. बट फुल फ्लेज कभी वीडियो एडिटिंग का कोर्स करा है 10-12 घंटे का, 20 घंटे का बैठ के तब शुरू करा है, नहीं. इट ऑल हैज बीन एक्टिव लर्निंग, वर्किंग फॉर फ्री इन द स्टार्ट और वर्किंग विद कॉलेज societies as he said or having internships and then getting started. This is the crystal layout. फ्री में काम करो, internships में काम करो या फिर खुद के projects पे काम करो. That's all. So the one thing to keep in mind at this stage when you're just starting out is कि पैसे को follow मत करना. इस टाइम सिर्फ थोड़ा सा टाइम होगा स्टार्टिंग में, जब अगर तुम अपने पोर्टफोलियो पे अगर काम कर लोगे ना तो तुम मतलब अनस्टॉपेबल हो जाओगे 110%. शुरू में तुम क्लाइंट्स के लिए फ्री में काम करो, कम पैसों के लिए काम करो. हमने भी करा है फ्री में, हमने नहीं भी करा तो कम पैसों के लिए हमने श्योरली काम करा है और उससे हमारा पोर्टफोलियो बना, वो भी बना. बट
in the future those clients gave us referrals to other clients, and उससे अब तक हम मतलब ऐसे ही होता है कि जब तुम फ्रीलांसिंग या गिग इकोनॉमी में जाओगे, एक क्लाइंट दूसरे को रेफर करेगा, दूसरा क्लाइंट तीसरे को रेफर करेगा, दैट्स हाउ यू लाइक स्टार्ट विद दिस चेन ऑफ वर्किंग। तो स्टार्टिंग बिल्कुल थोड़ा सा टाइम होगा इसमें, बिल्कुल भी अगर तुम्हें 1,000 रुपए पे पूरा महीना काम करना पड़ रहा है ना, कर लो, कोई नहीं, 1 महीना काम कर लो, सेकेंड मंथ तुम्हारी जो ग्रोथ होगी ना वो मतलब एक्सपोनेंशियल टाइप जाएगी 110%। एग्जैक्टली। तो जस्ट अ पर्सनल स्टोरी इसको सपोर्ट करने के लिए, जब मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करी थी तो मेरा फर्स्ट क्लाइंट वॉज $5 फॉर 14 डेज। $5 उसमें भी 20% कटा था, तो $4 आया था मेरे हाथ पे। दैट्स अप्रोक्सीमेटली 280 रुपीज़ फॉर 14 डेज, एंड दैट्स हाउ आई वर्कड। एंड उससे फिर मैंने अपना वो किया था। बट टुडे माई आर्ली रेट इज probably 6 times greater than that. So that's the power of compounding. कि जो मैंने उस दिन 14 डेज में करा था, आई गेट मोर देन दैट इन जस्ट एन आवर। एंड सेम इज विद प्रखर, ही एडिटेड वीडियोस वर 300 400, और जिसमें बहुत टाइम लगता था स्टार्टिंग में, एंड नाउ उसका अर्ली रेट, he actually makes that money in just 5 to 10 minutes of working. And that's a fact, and it's not like कि हम दोनों के साथ है, we live in a circle जहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स फ्रीलांसर्स। वी आल्सो हैव वन मोर क्लोज फ्रेंड दिविज जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग में है, एंड वी हैव अ कपल ऑफ मोर नेटवर्क जिनमें हमने हेल्प करा है। If you are consistent for 3 to 4 months into freelancing world, 1 lakh per month is not a big deal. Trust me. Everybody I know, everybody I've heard, or everybody I've talked to has killed it in the freelancing world if you're consistent with it for the next 4 to 5 months. तो मैं पैसा ये नहीं दिखा रहा तुम्हें करने के लिए कि यार तुम्हें पैसा कमाना है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इतना स्कोप फ्रीलांसिंग में है। You can actually earn 1 lakh per month easily. So don't make 1 lakh your goal. That's nothing. You can actually go more beyond that. Yeah. Okay, can we move to the next slide? All right, so the platforms and channels like we discussed, what I and Shivai have used are Upwork and Fiverr. For the starting, we've used this. We'll also tell you about how we work now and how what we've like मतलब कैसे हमने बढ़ाया उसे ये सब. So majorly I worked on Upwork. I've also worked on Fiverr, but Shivai has like mastered Fiverr. I'll tell you, he's made so much money on Fiverr. He's worked like he had so many gigs on Fiverr. He's had so many clients on Fiverr. So if you need to know anything about Fiverr, just like DM him on Instagram. He'll help you out, and he knows everything about Fiverr, all the tips and tricks. मतलब ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी ना कि तुम्हें लगेगा कि यार ये चीज हो नहीं रही, बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे सब कुछ हो जाएगा. बट उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू गो एंड एक्सप्लोर कि फाइवर एंड अपवर्क क्या है. सो विल टेल यू इन ब्रीफ कि क्या है. So I'll tell you about Upwork, and then I'll tell you about Fiverr. So Upwork is a freelancing platform where a client comes and puts in a gig or an ad. For example, a client came, he had a YouTube channel, he wanted someone to make 2 videos for him every week. Edit for me it was like 2 videos. I had to edit 2 videos every week. So he put in that he wanted a fixed price contract or a hourly contract. What happens is, in a fixed price contract, maybe a client आएगा, वो बोलेगा कि I'll pay a freelancer $300 per month. वो तुम्हें इतना पे करेगा और उसके लिए तुम सभी वीडियोस एडिट करोगे. बट देर कुड ऑल्सो बी अ सिनेरियो वेयर ही वांट्स टू पे यू आर्ली. फॉर एग्जाम्पल he'll pay you $10 per hour. So फॉर एग्जाम्पल कि तुमने एक वीडियो एडिट करी उसके लिए जिसमें तुम्हें एडिट करने के लिए 3 घंटे लगे, तो you'll get $30, एंड उसमें तुम वो जाके बिल कर सकते हो, वो फ्रीलांसर से को मिल जाएगा थ्रू द क्लाइंट. सो अपवर्क इज बेसिकली क्लाइंट्स तुम्हारे पास आएंगे सामने से, बट you have to put in proposals to that job. When for example that client came, he got like 10 to 20 proposals from different freelancers, and then he had to choose. Then we went on an interview. He asked me about my experience and everything. He already saw my work. When he was like कि ठीक है, हाँ, I know this guy can do my work, then he hired me. So that was about like a very basic introduction about Upwork and how this works. Shoy, can you tell them about Fiverr? Yeah. तो लाइक अपवर्क इज एन आउटबाउंड प्लेटफॉर्म। इसमें तुम क्लाइंट के पास जाते हो, उसकी जॉब रिक्वेस्ट के पास
कि हे आई नीड अ वीडियो एडिटर, तो तुम अपना कवर लेटर लिखते हो, तुम अपना बेसिकली प्रपोजल भेजते हो यूजिंग कनेक्ट्स, जिससे तुम अपवर्क पे शुरू हो सकते हो. फॉर फाइवर इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट. यहाँ पे क्लाइंट तुम्हारे गिग पर आता है. तो सपोज आई वांट टू हायर अ सोशल मीडिया मार्केटर, तो क्लाइंट विल कम देयर, ही विल राइट सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड उसके आगे बहुत सारे गिग्स आ जाएंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया मार्केटर्स की. तो वो दो तीन अपने प्राइसिंग के हिसाब से, जो उसको अच्छा लगेगा रिव्यूज के हिसाब से, he'll explore a couple of options and then he'll book a freelancer. So these are two various methods. Upwork पे तुम जाते हो, फाइवर पे क्लाइंट तुम्हारे पास आता है. तो जब फाइवर पे क्लाइंट तुम्हारे पास आता है, तो इसके कॉन्स बहुत सारे हैं और इसके प्रोज भी बहुत सारे हैं. तो मैं पहले प्रोज की बात करूंगा. एक बार अगर तुम्हारी गिग रैंक हो गई, वंस यू गेट अ कपल ऑफ रिव्यूज देयर, क्योंकि फाइवर इज अनलाइक अपवर्क, फाइवर इज कम्प्लीटली अ सोशल प्रूफ बेस्ड प्लेटफॉर्म. सोशल प्रूफ का मतलब रिव्यू बेस्ड प्लेटफॉर्म. जितने रिव्यू आएंगे तुम्हारे पास उतना बेटर होगा, जितने 5 स्टार्स उतना ट्रस्ट, उतने ऑर्डर्स उतना पैसा. बेसिकली यही चीज है. तो फॉर फाइवर पर्सनली आई वर्क विद 20 to 22 क्लाइंट्स एट अ टाइम. इतनी सारी लीड्स जनरेट करके दे सकता है फाइवर इफ योर गिग गेट्स अप वेरी वेल. सो आई हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे मेरे पास दिन में कम से कम 20 लीड्स, 15 क्वेरीज आ रही है दिन में, एंड आई जस्ट यूज टू हे थैंक यू एंड कर देता था. तो दैट्स द पावर ऑफ फ्रीलांसिंग. तुम्हें दैट्स द पावर ऑफ फाइवर. तुम्हें बार बार कोल्ड ईमेलिंग, लिंक्डइन, अपवर्क की तरह रोज तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह नहीं भेजने. यू गेट इन द लीड्स एंड एवरीथिंग. बट जहाँ मैं तुम्हें इसके फायदे बता रहा हूँ, मैं इसके नुकसान भी, क्योंकि नथिंग कम्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, तुम्हें इसके नुकसान भी जानने होंगे सो दैट यू आर क्लियर. इसमें नुकसान ये है कि तुम्हारा प्राइस पॉइंट वुड बी अ मार्केट इंडस्ट्री. मतलब तुम यहाँ पे क्वांटिटी में खेल पाओगे, क्वालिटी में नहीं खेल पाओगे. तुम्हारा क्लाइंट से इंटरेक्शन कभी कभी एनोनिमस भी रहेगा. मैं मेरे 80% क्लाइंट से मैं जानता हूँ, बट देयर आर 20% क्लाइंट जिनका मैं नाम भी नहीं जानता. दे प्लेस द ऑर्डर, I do their work and I go. I get the money, they get their work, that's it. So there's a client anonymity that can be done. थर्ड फैक्टर इज कि ये कुछ ज़्यादा ही रिव्यू बेस्ड है. तो कभी कभी ये टेंशन और टैक्सेटिंग भी हो जाता है कि यार रिव्यूज़ के लिए करना है, ये करना है, वो करना है, कैंसिलेशन की दिक्कत हो जाती है. सो ये सब दिक्कतें हैं. तो what I'd recommend is we'll be explaining you about cold emailing, LinkedIn and personal branding as well, कि तुम उससे कैसे लीड जनरेट कर सकते हो और हम कैसे करते हैं आजकल. So the fact about freelancing platforms is कि if you're a beginner, if you have no idea, if you just started out as a skill, या फिर तुम्हारे पास सिर्फ डेमो वर्क है, use platforms, use Upwork, use Fiverr. Upwork पे तुम अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसके बाद अप्रोच करने लग जाओ. Fiverr पे क्या सिस्टम है, तुम्हें बस अपनी एक बार एक गिग बनानी है एंड देन यू हैव टू वेट. उसके बाद थोड़े मेथड्स होते हैं, बट दैट आई कैन शेयर विद यू ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हिट मी अप, कि कैसे यू कैन एक्चुअली स्केल देयर, बिकॉज आई कांट गो, क्योंकि वो बहुत सारे लैबोरेटिव मेथड्स हैं. बट फाइवर में बेसिकली तुम्हें अपनी गिग बनानी होती है एंड देन यू हैव टू एक्चुअली वेट कि क्लाइंट आए. तो बहुत ही डिपेंडेबल होता है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो द राइट मेथड, सो इसलिए उनको लगता है कि फाइवर डजंट वर्क. तो अपवर्क पे यू हैव द एक्चुअली पावर कि तुम अगर 2 घंटे लगा रहे हो प्रपोजल में, तो तुम 10 प्रपोजल भेज सकते हो कनेक्ट यूज करके, एंड यू गेट द रिटर्न एज वेल अगर तुम सही से लिख रहे हो. वाइल यू आर डूइंग दिस एंड यू आर स्टार्टिंग, तो होता क्या है ना कि जब हम बिगिनर होते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता कि अच्छे कोल्ड ईमेल्स कैसे लिखते हैं, दिन में 200 से 500 लोगों को कोल्ड ईमेल कैसे भेजते हैं. क्योंकि जनरली हमें लगता है कि हम एक कोल्ड ईमेल भेजेंगे तो हमें उसका रिप्लाई आ जाएगा. ऐसा नहीं होता. 500, 500, 1000 कोल्ड ईमेल जब जाते हैं दिन में, तब उसका 10% रिप्लाई रेट आता है और 1% बुकिंग्स क्लोज होती है, फिर वो होता है. सो कोल्ड ईमेलिंग का बिजनेस पूरा अलग होता है. इट्स नॉट जस्ट एज सिंपल एज इट साउंड्स. ठीक है, एंड देन देयर कम्स लिंक्डइन आउटरीच, पर्सनल ब्रांडिंग ऑन ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कि जहाँ पे तुम अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हो लोगों के आगे. एंड यू नो व्हाट दैट, कि उसका टाइम लंबा चलता है. आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें फॉलोअर्स चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, बट तुम्हें कंटेंट डालना है उन प्लेटफॉर्म्स पे, और कंटेंट डालने में टाइम लगता है. वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, फॉर हैविंग हाई पेइंग क्लाइंट्स, हैविंग हाई विजिबिलिटी एंड डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बट उसमें टाइम लगता है. तो फॉर द शॉर्ट टर्म, इफ यू आर स्टार्टिंग, भूल जाओ कि फाइवर एंड अपवर्क टेक्स 20% ऑफ योर इनकम. जस्ट वर्क देयर, डेवलप अ साइड इनकम, एंड देन जब तुम्हें लगता है कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद, कि यू हैव डेवलप्ड अ गुड इनकम, यू हैव अ कपल ऑफ लैक्स इन योर बैंक अकाउंट, then you can move to high paying and high quality clients, high ticket clients from cold emailing, LinkedIn and personal branding. So that's it. Prakhar, do you want to add about Yeah, anything, okay. cold So emailing, how it works? some things here would be, first of all, if you think कि freelancing platforms पे इतना अच्छा crowd नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो I'll tell you one interesting thing कि many of the Fortune 500 companies, like the Yeah, top, the like the cream layer of companies hire from Upwork. I've yeah, seen a friend being hired by HP.
he got around 3.5 lakh rupees for editing one video. Even I was like, my mind was blown listening to that. A company hired him from Upwork, paid him 3.5 lakhs to for one video. Now this is not something कि मैं बता रहा हूँ कि इतना पैसा मिलेगा वो मिलेगा. He's got like 12 years of experience in, and he's like the best person I know जो video editing में है. He's so much experience. But ये सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि इतना हो सकता है. That's like, ये नहीं है कि इतने ही clients में तुम रह जाओगे. Second thing, कि अगर तुम just start कर रहे हो तो इवन फाइवर, इवन अपवर्क, इट विल टेक टाइम फॉर यू. ठीक है, इट विल टेक टाइम फॉर यू. इट वॉन्ट बी कि तुमने आज गिग बनाई हो, तुम्हें एक हफ्ते में ऑर्डर आ जाएगा एंड यू स्टार्ट अर्निंग. नहीं, नहीं होगा. सीधा सीधा बताएंगे, नहीं होगा. you'll have to be very patient. Like I told कि काफी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं छोटी छोटी जो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी. फॉर एग्जांपल अपवर्क पे अगर तुम्हें प्रपोजल डालना है तो कैसे तुम्हें डालना है कि क्लाइंट उससे मतलब इम्प्रेस हो. फाइवर पे तुम्हें कैसी गिग बनानी है और क्या क्या उसके अंदर तुम्हें रखना है जिससे तुम्हारी जो गिग है वो रैंक करे. ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, तो उस पे तुम्हें लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा. तो तुम्हें धीरे धीरे लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी. फॉर श्योर आएंगी लीड्स. बट ऐसा नहीं है कि लाइक यू विल मेक एन आईडी and people will start coming to you. And many of you would have already experienced this कि वहाँ पे competition है. So right now, after the workshop, I'll recommend you all to please go to Fiverr and Upwork and explore them. While you make IDs on them, I'll give you a trick or a simple tip. If you're just starting out and don't have anything in your portfolio right now, there are so many Facebook groups that are related to freelancing. So on those Facebook groups, you can go and check out the posts. Like for example, when I started, वहाँ पे मुझे एक post दिखी. He wanted to get daily videos, और he wanted कि दिन में 2 videos उसे चाहिए, but the pay was a little less that time. So I still went ahead and messaged him. He like approached me. He was said कि ऐसे ऐसे मेरे को video चाहिए, दिन में 2 videos चाहिए, and I'll give you the money at the end of every week or something. सो दैट समथिंग कि थोड़ा इजी है वो. अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें पोर्टफोलियो बनाना है एंड यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग इन द मनी ऑब्वियसली बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट. सो दैट कुड बी अ वे कि तुम थोड़ा स्टार्टिंग में एक आधा क्लाइंट लेने के लिए कुछ एक मतलब ट्रिक बोल सकते हो. क्योंकि वहां पे जैसे, और वहां पे अगर तुम एक्टिव रहोगे, उस पे बहुत सारी पोस्ट आती है. आई हैव सीन ऐसे ग्रुप्स हैं देर पे कम से कम भी 100 पोस्ट आएंगी वहां पे. इफ यू विल बी एक्टिव देयर और किसी ने पोस्ट डाली एंड यू रिप्लाई देम within like 5 to 10 minutes, most probably they'll be online and they'll contact you. अगर तुमने जब की जब उनको ढंग से बात करके आप मतलब अगर तुमने अपनी स्किल को मार्केट कर दिया ना सही से, आई एम लिटरली श्योर कि तुम्हें वो मिल जाएगा प्रोजेक्ट. इवन दो वहां पे फेसबुक ग्रुप्स आई हैवंट सीन वेरी हाई पेइंग जॉब्स और एनीथिंग. That's why I'm saying कि जब तुम start कर रहे हो and you don't have anything in your portfolio, for sure start with Fiverr and Upwork. And or even if you like have interest in going for other channels, if we'll tell you about cold emailing or personal branding, for sure start with that as well. But अगर तुम्हें portfolio के लिए कुछ चाहिए या starting में you want some experience कि देखना चाहता हूँ मैं कि कैसे काम होता है क्या होता है, तो Facebook groups could also be a good idea. If you want, we'll share some of the groups के link later on. So yeah, that's about it. If you're just starting out, these are some of the things. Also, now Shivay told you about cold emailing and personal branding. Cold emailing and personal branding are kind of the next step, but I'll tell you what basic एकदम idea कि होता क्या है. So cold emailing is something कि तुम किसी के साथ भी काम करना चाहते हो. For example कि I want to work with Microsoft. See, Microsoft won't be coming on Upwork to me. I won't be coming to me on Fiverr. How do I go to Microsoft if I have a dream to work in Microsoft? Only two ways: cold emailing or cold DMing through LinkedIn. That मतलब cold emailing में you don't have any barrier. किसी को भी किसी के साथ भी तुम्हें काम करना है, get their mail ID, कैसे भी करके उसकी mail ID निकालो. There are so many resources on the internet कि तुम्हें mail IDs तो आराम से मिल जाएंगी, for sure मिल जाएंगी. तुम्हें लिंक्डइन से भी लोगों की मेल आईडीज मिल जाएंगी. अगर तुम उनको ढंग से मार्केट कर देते हो अपनी स्किल और उनको एक कॉल पे ले आते हो और ढंग से मार्केट कर देते हो, तो
आई गेस यू कैन डू समथिंग कि तुम ईयर्स में भी मुश्किल से अचीव कर सकते हो. अगर माइक्रोसॉफ्ट में यू वांट टू वर्क इन, सी माइक्रोसॉफ्ट इज अ वेरी बिग एग्जांपल, बट अगर कोई मीडियम कंपनी है विच यू वांट टू वर्क फॉर, या फिर कोई, फॉर एग्जांपल मेरे केस में आई लाइक कोल्ड ईमेल्ड सो मेनी यूट्यूब चैनल्स. I cold emailed a YouTube channel. She had like 300K subscribers. So obviously I couldn't have, and she had like 100K on Instagram as well. So obviously मैं उसको कहीं पे मैसेज करता, she wouldn't have replied to me. She didn't even know I exist. But cold emailing से she knew. She like saw my email. उसने मुझे reply करा. We went on a call. Like I closed her within like few days. और 300K का चैनल को आई डोंट थिंक कि तुम अपवर्क, फाइवर, फेसबुक किसी भी उससे ले सकते हो. तो कोल्ड ईमेलिंग कुड बी द नेक्स्ट थिंग व्हेन यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो टू शो, व्हेन यू हैव गुड स्किल्स. ऑब्वियसली जब हम, मैंने और शिवाय ने स्टार्ट करा था, वी हैड मैनी फेलियर्स. मतलब आई टेल यू अ गुड एग्जांपल. we've had कि क्लाइंट्स हमारे मुंह पे बेइज्जती करके गए लिटरली बिकॉज हाउ बैड वी वर एट मार्केटिंग आवर स्किल्स. नहीं आता था, हम भी तो बच्चे ही थे. नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था. एक क्लाइंट ने तो लिटरली हमें लिख के भेजा, स्टॉप, डोंट सेंड मी एनी मोर मैसेजेस. ऐसा भी हुआ हमारे साथ. बट विद टाइम ऑब्वियसली वी हैव ग्रोन. हमें समझ आ गई कि क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करना है. तो व्हेन वी हैव अ गुड पोर्टफोलियो, व्हेन वी हैव द लाइक the skills to market ourselves, obviously you'll close clients. Even with personal branding could be a next step, or you could just start right now. For example, अगर तुम में से कोई ग्राफिक डिजाइन में है ना, I'll tell you कि पोर्ट वो स्टार्ट कर दो, अपना काम डालना स्टार्ट कर दो इंस्टाग्राम पे. इवन इफ कि तुम उस क्लाइंट्स नहीं आ रहे, you'll for sure कि get a kick from it कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. Even if people appreciate you, you'll keep working on that. I got a person who came to me. Many of you would have listened to coding blogs. I got a job offer from coding blogs through my personal brand. And like see, and I've seen so many people appreciating my work कि मेरे को भी confidence आता है कि यार, if so many people are appreciating my work, मतलब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ मैं. So that's also something that you can do. Or yeah, that's about it for these things, to reaching out Yeah, and everything. personal branding ka, like there's a lot of fun stuff in personal branding as well. So my content on my Instagram is all about freelancing. I rarely touch topics about what I actually do with my clients. So मेरा freelancing and marketing के ऊपर ही सारा content है. Despite saying that, over the time I built such a reputation कि I got over 10 to 15 leads for only marketing from marketing clients itself only on my Instagram. ना मैंने मार्केटिंग का कंटेंट डाला, ना मैंने अपनी कोई एक्सपर्टीज दिखाई. I just told the people that I do market and I just told them about freelancing. But it built an authority and a reputation in market कि 10 से 15 लोग literally came on my DMs asking for my services. So that's how personal brand can be powerful. And to everyone here, I believe यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग हैं. To everyone here, if you are not using Twitter, make a Twitter account and start consuming content there. If you can't be a creator there, start actually consuming. Instagram is a good place, but यार इंस्टाग्राम पे रील्स के आने के बाद carousels are nowhere. पहले carousels were very informative जो creators बनाते थे, but now if you aren't on Twitter you are missing a lot. You can actually learn the processes of how people are making $25,000 per month. Yes, I'm talking per month. $25,000 per month वो कैसे बना रहे हो on Twitter through cold emailing systems automation. वो थोड़ी advanced stuff है and you might get overwhelmed if you are a beginner. बट धीरे धीरे शुरू तो करो, कहीं से तो शुरू करोगे. हर चीज एक्सप्लोर करो, फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, हर जगह थोड़ा अपना टाइम दो. क्योंकि फ्रीलांसिंग इज नॉट समथिंग लाइक यार तुमने एक हफ्ता अपना एफर्ट दिया एंड सेकंड हफ्ते तुम एक्सपेक्ट करोगे कि क्लाइंट आ जाए और तुम बोलो फ्रीलांसिंग डजंट वर्क, क्लाइंट नहीं मिलता, फर्स्ट क्लाइंट नहीं आता, एंड देन यू पुट इन योर क्वेश्चंस. दैट डजंट हैपन हियर. 1 से 2 महीने का अपने आपको टाइम दो, कंसिस्टेंट रहो उन चैनल्स पे. देयर इज नो वे दैट यू वोंट बी एबल टू गेट अ क्लाइंट. दैट्स माई गारंटी. अगर तुम कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंसी पेशेंस ही सारी कीज है. बीट तुम्हें कोडर बनना है अच्छा, तुम्हें डिजाइनिंग में अच्छा जाना है, तुम्हें कोई प्लेसमेंट या जॉब भी लेनी है, पढ़ाई करोगे कंसिस्टेंटली यू विल गेट इट. एंड दैट्स बीन अ फॉर्मूला फॉर एवरीथिंग. पर्सनल ब्रांडिंग हो, कोड ईमेलिंग हो, कुछ भी हो लाइफ में, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, यू विल गेट इट. एंड जस्ट थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म. आज से 3 साल बाद कॉलेज के एंड का सोचो, 5 साल बाद सोचो, कैसे गोल्स बनाओ. सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट गोल सेटिंग की चीज़ एक बारी. Anything else we need to cover regarding platforms? I think that's it. But just a random thing to add here. just जो भी मेरे दिमाग में कुछ भी टिप आ रही है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि फ्रीलांसिंग में डोंट एवर गेट इनसिक्योर कि
तुम्हें फॉर एग्जांपल अगर तुम स्किल कुछ सीख रहे हो, डोंट एवर गेट इनसिक्योर कि यार अभी मेरे का इतना एक्सपीरियंस नहीं आया तो मैं इस बंदे के लिए काम नहीं कर सकता। ऑब्वियसली तुम्हें इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू कैन डू द जॉब, but there will be always someone with more experience than you, more better than you. But the person who gets the job is the person who can market himself right. अगर मैं क्लाइंट को ढंग से अप्रोच करके ढंग से अपने बारे में बताऊंगा, ढंग से समझाऊंगा जॉब के बारे में, आई विल गेट द जॉब इवन इफ यू, इवन इफ कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है या फिर तुम्हारा काम बहुत अच्छा है बट तुम्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करना ही नहीं आता। फॉर श्योर, how to market your skills is such a big thing when it comes to freelancing. Yeah, Yeah. that's about it. So over this all, we have covered everything on how you can actually start, what is freelancing, how you can get started with it, how you can develop your portfolio, work for free, what are the platforms and the channels you can actually start with. And now we'll be covering on the next topic, that is how you can scale your freelancer. So yeah, next slide. So basically scaling and sustaining a freelance business. This is for just I won't go deep into this. I'll just cover a brief up because I believe a lot of people here are beginners. But scaling and sustaining your freelance business पे मैं अपना सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बीइंग इन अ मार्केटिंग फील्ड कि मैंने कैसे आई हैंडल 20 to 25 क्लाइंट्स एट अ टाइम इन अ मंथ. फर्स्ट पॉइंट वाज, अगर हम यहाँ पे सब कॉलेज में, एंड आई बिलीव 98% लोगों का ऑनलाइन कॉलेज है, यार उसको लेवरेज करो. ऑनलाइन कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम है, काफ़ी मतलब असाइनमेंट्स आई नो आते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आती है, बट यू कैन एक्चुअली लेवरेज और ऑनलाइन क्लासेस. तो मेरे लिए सबसे बड़ा लेवरेज रहा है पेंडेमिक और ऑनलाइन क्लासेस, जिसके थ्रू मैं इतना टाइम निकाल पाया हूँ. अगर प्रॉबेबली मैं कॉलेज में होता तो शायद मैं इतना टाइम ना निकाल पाता. आज अगर कोई मेरा कॉलेज शुरू करे, आई कैन हैंडल स्टफ बिकॉज आई हैव द systems in place. So what I actually did was I hired people. Now when I hired people, I made hirings and actually distributed them work. So today I have a team of 5 people who handles my social media work. Though I have quit social media, but I still have 3 social media marketing. I still have 3 to 4 clients that are still there with me for over 8 to 9 months now. इतना consistent रहा हूँ मैं उनके साथ कि वो अभी भी है मेरे साथ. Though I have left that field, now I am generally into design, landing page designing, and email marketing. So I help clients particularly with that. So when you are scaling, you need to be sure कि अगर तुम्हारे clients suppose social media और personal branding से आ रहे हैं, never stop marketing yourself. ये मत करो कि अगर तुम्हें 2 से 3 client मिल गए तो you stop. Just keep putting out content, keep putting out proposals on Upwork, क्योंकि Fiverr पे तो you get it automated. But keep sending out cold emails. Be regular with clients. आ रहे हैं, काम आ रहा है, तुम busy हो, but just don't have it on a dry run कि तुमने सारा काम छोड़ दिया, अब तो 3 client है, मजे करूंगा. Be regular with that part. हमने ये personally गलती करी, हम कभी कभी ये करते हैं, but this is this one important thing जो तुम्हें long term में help करेगी if you are serious about freelancing. अगर तुम इसे side hustle की तरह ले रहे हो, make sure कि you give it appropriate time. अपना time divide करो weekends पे and you give it time. Now the second thing is how you can actually sustain in the freelance businesses. If you're working with Indian clients, that's good, but I would recommend that we should go about and work with international clients. There are 2 things. First, you get a high pay. जो काम यहाँ पे 100 रुपये में होगा वो लोग वहाँ पे 1200-1300 रुपये देंगे, straight fact है. और दूसरा, you get to know what's about their life, how they think, how they speak. You get to know about the client and what's happening in there. तो आज जब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम करता हूँ, आई डोंट हैव इंडियन क्लाइंट्स फॉर द पास्ट 8 to 9 months. I haven't taken a single Indian clients. I have only worked with international clients based in US, UK, Europe. That's my personal opinion कि यार इंडियन क्लाइंट्स एक्चुअली माइक्रो मैनेज यू. माइक्रो मैनेज मतलब रोज मैसेज करेंगे कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. They actually sometimes exploit you with less money, but abroad you can actually take the help of the money gap we have. उनके लिए यार उनका हेयर कट जो है ना यार, वो $100 में होता है. $100 is 7,000 rupees. For us, haircut is anywhere between 100 to 300 rupees at max for a boy's haircut. I'm generally speaking this fact. So you understand what kind of a money gap we have there. We are actually not competing on location. We are actually competing them with on skills and expertise. जो उनको यूएस वाला बंदा देगा, we can actually offer them. यूएस वाला बंदा अगर उनको $5,000 चार्ज करेगा, दैट्स 3.5 लाख, we can actually charge $2,000 and deliver a better quality. हमारे लिए 1.5 लाख बहुत बड़ी चीज़ है. Probably Indian client won't give that. अगर वो कोई बड़ी startup या फिर funded startup से नहीं है, probably Indian client won't give you that. But there in US, $2,000 for them
is probably nothing for a service. Same goes for social media marketing as well. I started small, $300, $500 for a service, for a video editing. उन clients को ढूंढना मुश्किल होता है. But once you get the hold of the freelance business, you can actually close those clients. So leverage the international gap with money clients. थोड़ी communication में दिक्कत आएगी, तुम्हें थोड़ा लेट रात को 2-3 बजे सोना होगा, but I believe फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑनलाइन कॉलेज में हम सभी थोड़ा लेट सोते होंगे. तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मेरी पर्सनली स्लीप साइकिल इतनी अच्छी नहीं है. आई स्लीप एट 4 to 5 a.m. कभी क्लाइंट का काम होता है, कभी खुद ही ऐसे नहीं सो पाता. बट बस क्लाइंट कम्युनिकेशन की एक फैक्टर जो तुम्हें टाइमिंग में मैच करनी होती है. Rest all the money gap, the leverage, and but the best part is they give you the project and they leave it to you on your creativity and stuff. Apart from the Indian clients जो तुम्हें रोज पिंग करेंगे, and Indian clients have actually scammed me as well. तो दिसंबर के बाद तो मैंने उनसे काम भी नहीं करा. मतलब I have got leads but I haven't even treated them कि sorry I won't be able to take your projects. And I guess प्रखर के साथ और जो भी मेरे आसपास friends है, they believe with the same thing. If you actually need to grow, work with the western side, work with the international clients, but don't work with Indian clients once you have worked with them once or twice. So that's the tip. Second is कि अगर तुम्हें लग रहा है कि you are growing, start hiring people in yourself. I am personally just 20, but I have hired people who are 25, 26, 27 as well. So I've distributed my work and that's how I scaled. कि जब मैं इनके साथ कभी कभी गोवा भी गया था, मनाली गया था, all my work was being done previously. But I'm not saying कि this can't happen in every field. I was in marketing field तो मैंने उसमें distribute कर दिया था. When you're in creative field like graphic designing, video editing and all those, वहाँ पे तुम्हारे quality of work important होता है. तो वहाँ तुम literally outsource नहीं कर सकते हो किसी को सही से कि तुम किसी को delegate कर दो team member को until and unless you have plans for an agency. Now there comes a point of agency when you have scaled your freelance journey. You can plan up for agencies, then you can be a certified businesses, and then you can pitch it as a whole group of people. So agency का में तो अभी तक हम दोनों ने कुछ नहीं किया. We do have plans for having an agency, but not currently. So that's all about it for sustaining into the freelance business. Is all about consistency, patience, being patient, and working with the international clients. How you can actually grab international clients? It's quite easy. Fiverr, Upwork as platforms. फाइवर अपवर्क यार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे आर द एक्चुअली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म. अगर तुम कभी यूएस में जाओगे, सबसे ज्यादा मार्केटिंग होती है यार. फाइवर के जो बैनर्स है ना, वो बस पे भी लगे होते हैं. और अपवर्क तो वैसे ही यहाँ पे फॉर्च्यून 500 आते हैं. सो फाइवर अपवर्क की मार्केटिंग का तुम टेंशन मत लो. फाइवर अपवर्क पे बहुत बायर्स आते हैं अगर इफ यू गेट योर गिग एंड इफ यू गेट योर प्रोफाइल अप देयर. कोल्ड ईमेलिंग से यू कैन एक्चुअली अप्रोच एनीवन. लिंक्डइन हैज गिवन यू द एक्सेस टू get out emails of anyone through जो भी international clients हैं. एंड कोल्ड ईमेल तुम उसे अप्रोच करो. एंड पर्सनल ब्रांडिंग से तुम्हारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं. जोग्राफिकली तुम सिर्फ इंडियन ऑडियंस पे जा रहे हो. यू कैन एक्चुअली रीच आउट टू द ऑडियंस इन यूएस, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑल these continents and countries. So that's all about it. That's all we had in scaling and sustaining a freelance business. Prakhar, do you want to add anything? Yeah, just a general thing. I think scaling and sustaining a freelance business. See, everybody has their own story when it comes to freelancing. I and Shivay and even our friends have had very different, uh, like the journey that we've had. So scaling and sustaining, I guess, comes from experience. कि जब तुम Yeah. स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारी जर्नी हमसे बहुत अलग होगी, फॉर श्योर बहुत अलग होगी. जब तुम्हारे ऊपर आएगा ना, जब तुम 2 क्लाइंट के साथ तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, अगर एकदम से 4 मिल जाएंगे, तुम अपने आप कुछ ना कुछ उसके लिए जुगाड़ करोगे. देखो, इंडियंस जुगाड़ करते हैं, तो जुगाड़ तुम अपने आप ढूंढ लोगे. आई नो इट. अभी मार्केटिंग में फॉर एग्जाम्पल शिवाय टोल्ड कि ही हायर्ड पीपल. ऑब्वियसली वीडियो एडिटिंग में आई ऑल्सो हैड पीपल जो मेरे लिए काम कर रहे थे. आई टेकन लाइक जॉब्स फ्रॉम people from the US. I marketed my services and got my work done from them. बट ऑब्वियसली कि वीडियो एडिटिंग में यू हैव टू कीप एन आई ऑन देम बिकॉज यू, मतलब तुम्हारा काम है देखना कि जो डिलीवर हो रहा है वो अप टू द मार्क है या नहीं. वो तो मार्केटिंग में भी होगा, ऑब्वियसली होगा. बट सिंस इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, एवरीथिंग नीड्स टू गो एकदम ढंग से. ऑल्सो for now, I've explored a lot. I'm still into video editing. It's been more than like 1.5 to 2 years. It's more than that. तो अभी आई रिसेंटली थॉट कि यार मैं कब तक वीडियो एडिटिंग करूंगा, कुछ तो और भी चाहिए ना साथ में. तो अब फॉर स्केलिंग आई थॉट कि आई ऑल्सो गो इनटू फिल्म मेकिंग.
विद फिल्म मेकिंग, सी वीडियो एडिटिंग में क्या है, तुम्हें वीडियोस मिल रही हैं, तुम उसे एडिट करके तुम उसे एक फाइनल प्रोडक्ट में बना रहे हो जो अपलोड रेडी होगा, बेशक वो यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, कहीं पे भी है. विद फिल्म मेकिंग कमिंग इन टू द प्ले, वट आई कैन डू इज कि मैं एकदम स्क्रैच से एकदम एंड तक सब कुछ डिलीवर कर सकता हूँ. सो दैट्स हाउ आई कैन टेक माई बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, दैट्स हाउ आई कैन स्केल द बिजनेस. तो वंस यू स्टार्ट विद इट, अभी यू, अगर यूर जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो अभी योर वर्क इज टू जस्ट स्टार्ट आउट. उसके बाद यू कीप लुकिंग फॉर लाइक थिंग्स कि तुम क्या कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि मैं वीडियो एडिटिंग तो कर ही रहा था, और मैं उसमें फिल्म मेकिंग भी ऐड कर दूंगा अगर मैं थोड़ा इसमें एक्सपोजर ले लूंगा, और तो मैं वो एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर सकता हूँ. सो दैट्स हाउ यू कैन लाइक कीप स्केलिंग थिंग्स. उसके बाद आई माइट फाइंड समथिंग एल्स कि यार मैं ये भी कंबाइन करूंगा. तो फॉर एग्जाम्पल, आई नो समवन, ही फोटो, मतलब वो फोटोग्राफी करता है, फिल्म मेकिंग करता है, वो वेबसाइट्स बनाता है. सो वो ही अप्रोचेज अ ब्रांड, उनको बोलता है कि तुम्हारी पूरी ब्रांडिंग मैं करूंगा, तुम्हारा इंस्टाग्राम मैं संभालूंगा. ही हैज अ टीम ऑफ लाइक 15 to 20 people. वो पूरी उनकी वेबसाइट बनाता है, उनकी वेबसाइट में जो पिक्चर्स जा रही हैं वो फोटो खींचता है, वो जो उनकी वेबसाइट में वीडियोस जा रही हैं वो करेगा. जो उनका यूट्यूब चैनल है किसी ब्रांड का, उसमें जो वीडियोस जा रही हैं उसको एडिट और फिल्म वो एजेंसी करेगी, या फिर वो ग्रुप ऑफ पीपल करेगा. सो दैट्स हाउ यू कीप स्केलिंग इट. जब तुम एक बार अपना, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ग्राफिक डिजाइनिंग में हो, देन यूल हैव अ डिफरेंट थिंग कि तुम ऐसे स्केल कर सकते हो. मार्केटिंग में इट्स डिफरेंट, वीडियो एडिटिंग में इट्स डिफरेंट, एंड इट्स ऑल्सो डिफरेंट बेस्ड ऑन व्हाट योर एक्सपीरियंस इज. सो वंस यू स्टार्ट, आई गेस तुम ये तो धीरे धीरे अपने आप ही सीख जाओगे, with people coming in and more clients coming in, and obviously बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा. once you start, within few months तुम्हें ऐसे लगेगा कि यार मेरा एकदम, मतलब जो सोचता था ना उससे एकदम डिफरेंट हो चुका है. कि फ्रीलांसिंग में हमने भी जब स्टार्ट करा था, I've honestly tried Fiverr and Upwork in 2018 और 2017. I failed and I was like, हाँ ये वेबसाइट्स तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है इन पे. बट अभी when I was consistent, I was able to get results, and 1.5 2 years later than that, now I think I have something कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, कि मैं को अपने आप पे भरोसा है कि ठीक है, आई कैन गेट क्लाइंट्स. और कभी भी मेरे को जरूरत पड़ेगी तो आई हैव सो मेनी चैनल्स, आई हैव अपवर्क, आई हैव फाइवर, आई हैव कोल्ड ईमेलिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, सो मेनी चैनल्स राइट नाउ, कि मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा व्हेन आई वांट, कि मैं बस मेहनत करनी पड़ेगी. सो दैट कम्स विद वो, तुम्हारा अपने आप माइंडसेट वैसे वैसे चेंज होता जाएगा जब तुम्हारा बिजनेस स्केल करेगा, मोर क्लाइंट्स मिलेंगे, पोर्टफोलियो बढ़ेगा. सो दैट्स नॉट समथिंग कि तुम्हें अभी टेंशन लेने की जरूरत है. बट या जस्ट टू गिव एन आइडिया, तो हमने थोड़ा तुम्हें ब्रीफ कर दिया कि हाउ we've scaled and sustained our businesses for now. Yeah. And just to add this, apart from scaling and sustaining, I guess यहाँ पे सॉल्व होगा, हम सबका सेम डाउट होता है कि यार भैया इतना कंपटीशन है, हर जॉब पे इतना वो है, हर बंदा डिजिटल मार्केटर बना हुआ है, हर बंदा वीडियो एडिटिंग में है, ग्राफिक डिज़ाइन में है, तो हम स्टैंड आउट कैसे करेंगे, हम कंपटीशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं. यार पहली बात, कंपटीशन हर जगह है. आई गेस यहाँ पे हम बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से होंगे, कुछ अलग कॉलेजेस से होंगे, हम सब ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, हम सब ने बोर्ड्स दिए. यार कंपटीशन कहाँ नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा, कंपटीशन को बीट करने के लिए मैंने सीख लिया है कि सब में एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती. सोच सब पाते हैं कि मैं स्टार्टअप खोलूंगा, मैं साइड हसल करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, बट अगर तुम्हें बात बुरी लग रही है तो अच्छी बात है, बट सब एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. अगर आज यहाँ पे सपोज 100 लोग हैं, आई हार्डली बिलीव कि 10 से 12% 10 से 12 लोग ज़्यादा कोई एक्चुअली यहाँ से कुछ लर्न करके घर जाके एग्जीक्यूट करेगा. हम सबकी आदत है कि हम सब कुछ सुन लेते हैं, बट हम एक्चुअली में कुछ करते नहीं है काम. हम बस सुन के छोड़ दे कि हाँ कर लेंगे, पता है फ्रीलांसिंग ये होती है, पता है एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है, बट वी डोंट एक्चुअली एग्जीक्यूट. अगर तुम्हें एक्चुअली में कॉम्पिटिशन स्टैंड आउट करना है, एंड यू रियली वांट टू अचीव दैट फ्रीडम, बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंट, और कंपटीशन की टेंशन मत लो यार, वो अपने आप हट जाता है. मतलब मेरे सामने, आई एम रिपीटिंग दिस, कि मेरे सामने ऐसा कोई बंदा नहीं है. आई हैव हेल्प्ड एंड आई हैव सीन ओवर 50+ पीपल जिन्होंने अपना फ्रीलांस जर्नी शुरू करा, चाहे वो कोल्ड ईमेल के थ्रू हो, शायद फिर उन्होंने खुद ही कर लिया. कोई कोई टेलीग्राम ग्रुप से लीड जनरेट करता है, मैंने कभी टेलीग्राम ग्रुप से लीड जनरेट नहीं करी, मैंने कभी कोरा से लीड जनरेट नहीं करी, बट आई हैव पीपल, आई नो पीपल जिन्होंने वहां से अपने लिए फ्रीलांस बिजनेस के लिए लीड जनरेट करी. क्योंकि वंस यू गेट consistent with it, once you get patient with it, तुम्हें पता लग जाएगा कि what's working for you, what's not working for you. कुछ लोगों ने फाइवर अप पर कभी देखा भी नहीं, दे सीम लाइक बहुत बेकार प्लेटफॉर्म, जो चलते नहीं है. उन्होंने कोल्ड ईमेल पे फोकस करा और वो कोल्ड ईमेल से स्केल कर रहा है. हर चैनल काम करता है, सबके लिए डिफरेंट जर्नी होती है. इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें कंसिस्टेंट और पेशेंट होना है. और ट्रस्ट मी,
कंपटीशन से स्टैंड आउट करना है ना, बस कंसिस्टेंट और पेशेंट हो, बाकी कुछ मत सोचो कि तुम्हारा कैसा लेटर जा रहा है, क्या जा रहा है। तुम दिन भर दिन जब प्रैक्टिस करोगे और तुम दिन भर दिन कोई नई चीज़ें सीखोगे, यू विल गेट बेटर एट इट, देयर इज नो डाउट एट इट। तो कभी मत सोचो कि कंपटीशन तुम्हें रोकेगा। तुम्हें अगर गूगल में भी जॉब चाहिए तो वहाँ पे भी कंपटीशन है, तुम्हें किसी टॉप स्टार्टअप, किसी टॉप कंपनी में चाहिए, वहाँ भी कंपटीशन है, बहुत लोग देख रहे हैं। तो कंपटीशन थ्रू आउट द लाइफ रहेगा। तुम्हें बीट करने के लिए बस कंसिस्टेंसी, पेशेंस चाहिए। एंड क्योंकि मैं इतना इस पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव बीन दिस स्टेज 4 मंथ्स पहले, जब मेरे को लगा कि यार मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एंड आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच इनटू लैंडिंग पेजेस डिजाइन एंड ईमेल मार्केटिंग, और मैं एकदम जीरो पे था, मेरे पास कोई क्लाइंट टेस्टिमोनियल नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, बट आई स्टिल फिगर आउट अ जर्नी। और मैंने 1-2 महीने में उतना स्केल कर लिया जितना मैंने पिछले 1.5 साल में स्केल करा था, रेवेन्यू वाइज एंड ग्रोथ वाइज, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट था और पेशेंट था। फिर मैंने ये नहीं सोचा कि कितने सारे लोग 1.5 साल से इस फील्ड में हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने पर्सनली ये फील करा, मैंने पर्सनली ग्रो करा, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम कर सकते हो। तो भूल जाओ वो सब बकवास की ये प्लेटफॉर्म्स नहीं चलते, या वो सब सारी चीज़ें जो तुम समझ रहे हो, जो सारा ऑलरेडी कंटेंट यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे है रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग। Yeah, that's all from our side. We'd wrap up this session. So thank you all for attending. Just as a bonus for all, Saroj, Sarabjot, you can come on the last slide. So just as an incentive, we have already worked on some products. So I have worked on a freelancing guide, जिसपे जितना भी हमने तुम्हें बताया ना उसका थोड़ा और डिटेल में है और सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है. So you can just visit my Instagram and you can get that. And for all the creative people and the video editors out there, Prakhar has an interesting product for you as well. Prakhar, you can tell it about it. Yeah, so any of you who's interested into video editing, I have a pack full like effects, transitions and everything. Basically, if you're just starting out, they'll help you a lot, because when you just start out, you obviously won't be doing everything from scratch. So some of the presets that if you want, go check it out. There'll be a link in my bio, and also we'll have all the links in about our all the social media handles in the bio. So go check out Yeah, the Instagram ones for both of us. exactly. We have mentioned our Instagram handles. You can check them out. We have already published a lot of content on marketing, video editing, and freelancing. उससे तुम्हें काफी information मिलेगी. And all those सारा reels and carousel post में do check that out. And I hope that the session was useful for all of you and you could take something from it. Thanks. So yeah, Thank you both Sarabjot. of you for sharing your experience and your knowledge. I hope everyone from audience will love to share their feedback. So we are sharing a feedback form. So guys, please check out that feedback form in the link. Please, all the audience members, please make sure to give your feedback and receive your certificates for joining this. And now we have some questions already from audience, so we would like to uh, know some answers from you. So the Sure. first question, so the first question I have is, how can we start advertising our service availability? That I'm sure you Pardon? get my question. Yeah, repeat it. How can we start advertising our service availability? Okay, so Uh, to start with, Prakhar, as we said, Upwork, Fiverr, personal brand. These are the three things where you can right now go and start with it. Go to Upwork, go to Fiverr, उधर जाओ, देखो कि कैसे चलता है वो प्लेटफॉर्म, लोगों ने कैसे बनाया, डू अ कंपटीशन एनालिसिस कि अगर तुम वीडियो एडिटिंग में जा रहे हो तो लुक एट द प्रोफाइल्स ऑफ अदर वीडियो एडिटर्स, अगर तुम ग्राफिक डिजाइनिंग में जा रहे हो तो लुक एट द प्रोफाइल ऑफ अदर ग्राफिक डिजाइनर्स, उन्होंने क्या करा है, लुक एट द प्रोफाइल जो अच्छा कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन्हीं की प्रोफाइल देखोगे जो अच्छा कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल्स देखो, यू विल गेट टू नो तुम्हें कैसी प्रोफाइल बनानी है, मेक अ प्रोफाइल फॉर योरसेल्फ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम्हारा कुछ क्रिएटिव फील्ड में है, तो तुम एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, उधर भी तुम्हें मतलब ऑब्वियसली यू कैन शो पीपल कि तुम ऐसा ऐसा काम करते हो। सो दीज आर द थ्री वेज आई गेस, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि दोज वर्क एंड यू कैन ट्राई देम आउट टू टेल पीपल दैट यू गिव दीज काइंड ऑफ सर्विसेज। yeah. Thank you for your answer. Now, Arshita, please. So yeah, the second question is, what So should be you our can, main goal? Arshita, you both can ask us a couple of questions after we wrap up with that. जिन लोगों ने एक्चुअली अटेंड करा और सुना है ना, वी कैन टेक क्वेश्चंस फ्रॉम देम डायरेक्टली, बिकॉज आई गेस पूरे सेशन में थोड़ा डाउट्स आए होंगे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है. Okay.
तो दो Yeah, तीन क्वेश्चंस के बाद वी कैन we'll डायरेक्टली ask. मूव टू द Yeah, ऑडियंस. yes, yes. We'll ask some few questions and then we will go to audience members. Yeah. ठीक है. Yeah, Arshita, go ahead. Yeah, please. Yeah, the question was that what should be our main goal while freelancing? Your main goal while freelancing should be to actually have a freedom mindset. कि तुम you can actually gain freedom, and this is something that is very subjective and very personal. प्रखर का अलग होगा, सरबजोत अगर फ्रीलांस शुरू करेगा तो उसका अलग होगा, और मेरा अलग था. मेरे 12 मंथ में मुझे थोड़े मॉनेटरी गोल्स थे, आज मेरे कुछ अलग गोल्स हैं. तो गोल्स चेंज सबके अलग अलग, और किसी के गोल्स छोटे या बड़े नहीं होते, वो सब पे रिलेटिव होते हैं. तो आई बिलीव इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन. Okay. So I have next question. Uh, the question is, how do you manage freelancing and college life? That is, many people have asked this question. सी How लाइक to वी manage? टोल्ड, अभी तो यू हैव कॉलेज ऑनलाइन, तो कितना ही तुम पढ़ते होगे सबको पता है. तुम सुबह क्लास लगाते होगे, बीच में सोते होगे, तो जब तुम क्लास चल रही है साइड में फोन पे लगने दो क्लास, लैपटॉप उठा के बैठ जाओ. उसके अलावा क्या, शाम के बाद करो कुछ नहीं. मेरे को पता है ऑनलाइन में तो यू कैन इजीली डू इट इफ यू वांट टू स्टार्ट. अभी ऑनलाइन कॉलेजेस के टाइम इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद इट. किसी का ऑफलाइन कॉलेज है तो देखो दैट्स गोइंग टू बी, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा. यू हैव टू मेंटेन अ शेड्यूल और समथिंग. जब हम भी कॉलेज में थे, हमने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करा था, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट वी हैड टू पुट इन एक्स्ट्रा टाइम. हम कॉलेज से आते थे 6 बजे, आके थक जाते थे, दोस्तों के साथ मस्ती करते थे, खाना खा के रात को 1 घंटा बैठ जाते थे. सो धीरे धीरे स्टार्ट करो. शुरू में आधा घंटा कॉलेज के बाद बैठ जाओ, 1 घंटा बैठ जाओ. धीरे धीरे जब तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे ना, तो तुम अपने आप एडजस्ट करना स्टार्ट कर दोगे. जब फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें फर्स्ट जॉब मिल गई, तो सेकंड जॉब के लिए फिर तुम्हें टाइम अपने आप निकल आएगा, ऑब्वियसली अपने आप निकल आएगा. सो ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेबल पे थोड़ा सा एडजस्ट करो और धीरे धीरे टाइम देना स्टार्ट करो. पहले दिन 3 घंटे तो नहीं बैठोगे, पहले दिन आधा घंटा बैठो, फिर बढ़ाते रहो थोड़ा थोड़ा. और पॉइंट ये कि यार तुम्हें फ्रीलांस शुरू करने के लिए तुम्हें 8-9 घंटे नहीं देने दिन में. हम्म. 1 घंटा 2 घंटा मैक्स 2.5 घंटे दोगे फॉर लीड जनरेशन, मैनेजिंग योर क्लाइंट. क्लाइंट वर्क अलग है, वो तुम्हारा सब पे वेरिएबल होगा, बट क्लाइंट मैनेजमेंट, क्लाइंट हंटिंग एंड एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर क्लाइंट्स, यार 1-2 घंटे देने दिन में. आई डोंट थिंक सो कि 1-2 घंटे निकालना मुश्किल है अगर तुम सीरियस हो. वही बात है ना कि आधे लोग सीरियस नहीं होते, वहीं तुम्हारा आधा कंपटीशन खत्म हो जाता है. जो आधे लोग सीरियस होते हैं वही चल पाते हैं आगे. सो या दैट्स इट. Okay, the second question is connects are limited on Upwork and there are huge proposal going to the client. How to stand out faster? Please answer this point. Okay, I'll tell you one thing. Upwork has changed so many of its policies. अभी क्या है, पहले होता था कि you had like 40 or 30 connects in the starting जो खत्म हो जाते थे. I've personally spent thousands of rupees on connects, and I think कि अगर तुम uh, 500-600 rupees भी clients उस पे खर्च कर रहे हो connects पे, once you start earning, तो you'll get greater returns in the future for sure. For example, I've like spent like 6 connects on a job, and उसके बाद इफ आई गोट लाइक $100 जॉब, तो ऑब्वियसली वो तो तुम्हें बाद में जाके फॉर श्योर तुम्हारा नेट प्रॉफिट तो ज्यादा ही आएगा. एंड अपवर्क ने अभी क्या करा है कि इफ यू पुट अ प्रपोजल एंड दैट प्रपोजल गेट्स एक्सेप्टेड, यू गेट 10 connects. I started with 42 connects on my profile. I have 102 connects right now, and I don't even have the audacity to use it. सो ढंग से तुम थोड़े, मतलब शुरू में देखो 30-40 मिलेंगे, अपना बेस्ट दो. जब तुम्हें धीरे धीरे करके अपनी मार्केट करने आ जाएंगे सर्विसेज, तुम्हारे प्रपोजल एक्सेप्ट होने लग जाएंगे, तो आई गेस कनेक्ट्स की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप ही बढ़ते जाएंगे. हर बार तुम्हें 10 एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे. तो शुरू में या थोड़ा सा होगा मतलब ये. एक बार तुम्हें लेने भी है 200-300 रुपए 400 रुपए कनेक्ट्स लेने पड़े, तो डाल दो, ले कोई लो. नहीं है. हाँ, इट्स अब अ. तो एक्चुअली ये है ना कि शुरू में आई रिसेंटली स्टार्टेड अप, तो शुरू में 50 कनेक्ट मिलते हैं, फिर हर महीने 10 कनेक्ट मिलते हैं. तो दैट्स ऑलमोस्ट 60 कनेक्ट्स पर मंथ. मतलब 60 कनेक्ट्स जो मिनिमम हो, 60 कनेक्ट्स में तुम 10 प्रपोजल डाल सकते हो. अगर तुम्हारे 10 प्रपोजल में से एक भी प्रपोजल पे रिप्लाई बैक नहीं आ रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, तो तुम्हें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या तुम्हारी जॉब सिलेक्शन ठीक है, और दूसरा तुम्हारा कवर लेटर कैसा है. क्योंकि अगर 10 के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं आ रहा है, सो यू नीड टू रीवैल्यूएट कि तुम कुछ गलती कर रहे हो उसमें. तो और कनेक्ट खरीदो. तुम्हारी एक जॉब आएगी यार, मैंने वो $30 की होगी, वो तुम्हारे 10 टाइम्स रिकवर कर देगी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट एक टाइम में. तो मत सोचो कि तुम्हें 500-800 रुपये खर्चने पड़ रहे हैं. मम्मी से ले लो वो पैसे, पापा से ले लो वो पैसे, लगा दो अपवर्क पे, उसका रिटर्न पक्का आएगा, गारंटी है.
Okay. Thank you for answering this question. And I have next question. Uh, some information about landing pages CRO from Shivay. Where to learn this and where we can get these gigs from outside Upwork and Fiverr. Yeah, so regarding landing pages and CRO, for those of the people who don't know, landing pages and CRO, for CRO it means conversion rate optimization. तो होता क्या है कि जब तुम फेसबुक एड्स और ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हो, तो तुम एक लैंडिंग पेज पे जाते हो कि सब लोग, चाहे वो ईमेल के थ्रू जा रहे हो, चाहे वो एड्स के थ्रू जा रहे हो, या फिर तुम अभी शायद मेरी ई बुक देखोगे, मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर तुम एक लैंडिंग पेज पे जाओगे। अब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं पेड कैंपेन चला रहा हूँ, तो उसमें कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज करना होता है मुझे, कि मेरे को लैंडिंग पेजेस के काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं जो मेरे को ए बी टेस्टिंग जानने होते हैं, कि मैं हेडलाइन टेस्टिंग करूंगा, आई चेक ऑन हाउ अ यूजर, अगर प्रखर मेरे लैंडिंग पेज पे आ रहा है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो आई कैन एक्चुअली ट्रैक इट अप. So that's how a conversion audit takes place, a user experience audit takes place, and landing pages are basically development, copywriting, and design. मेरे को तीनों आते, तो दैट्स अ पर्क फॉर मी, जिससे मैं अपने क्लाइंट को पूरा अपसेल कर पाया था. बट कुछ लोग सिर्फ कॉपी राइटर्स जो सिर्फ लैंडिंग पेज कॉपी लिखते हैं, कुछ लोग सिर्फ डिज़ाइन करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ डेवलप करते हैं. मुझे तीनों आते थे, तो मैं क्लाइंट को अपने तीनों ऑफर करता हूँ. साथ में मैं ईमेल मार्केटिंग का भी ऑफर कर देता हूँ, और मेरे को एड्स भी आता है. तो यू नो आई एम काइंड ऑफ, मतलब मेरा जनरलिस्ट पार्ट हो जाता है. So that's all about landing pages and CRO. How you can actually go about it, how actually you can learn about it. ये थोड़ी हाई इनकम स्किल्स है, और ये थोड़ी एडवांस लेवल पे स्टफ है, अनलाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड रनिंग जस्ट एड्स. सो यू हैव टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन इट इफ यू एक्चुअली लर्न. सो आई इन्वेस्टेड इन अ कोर्स बाय वैभव सिसिंती. तो मैंने वहाँ से सब कुछ सीखा था. इट वॉज अ ग्रोथ हैकिंग कोहॉर्ट. उसके बाद एक CXL इंस्टीट्यूट का CRO कोर्स आता है, तो मैंने वो सीखा था फॉर CRO एंड लैंडिंग पेजेस. उसके बाद आई कैन गेट सम कॉन्फिडेंस कि आई कैन क्लोज सम हाई टिकट क्लाइंट्स. For going about on how you can actually pitch up for clients from outside Fiverr and Upwork, cold emailing and LinkedIn outreach are the stuff. Cold emailing पे अगर तुम्हें करना है, तो यू कैन एक्चुअली हैव अ लैंडिंग पेज ऑडिट. फर्स्ट तुम्हें कुछ लीड मैग्नेट अपने क्लाइंट को सेल करना पड़ेगा, तो यू कैन पिच अप अ फ्री लैंडिंग पेज ऑडिट एंड अ CRO ऑडिट, जिससे तुम ऑडिट करोगे कि उसके क्लाइंट उसके लैंडिंग पेज में क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे ही कैन improve. एंड उसके बाद यू कैन अपसेल सर्विसेज की, देखो मैं तुम्हें बताया कि ये सब गलती है, अब मैं इसको सही भी कर सकता हूँ, यू कैन हायर मी एट दिस प्राइसिंग. सो कोल्ड ईमेल का ये फॉर्मेट है. फॉर लिंक्डइन सेम यही है कि तुम्हें उसे कनेक्शन पर्सनलाइज करना है, और बेसिकली अगर तुम्हें लैंडिंग पेजेस एंड CRO से शुरू करना है ना, अप्रोच एजेंसी ओनर्स, जिसका भी क्वेश्चन है, इफ यू आर इन मीटिंग, अप्रोच एजेंसी ओनर्स, एजेंसीज बेस्ड इन US, UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑल द इंटरनेशनल एजेंसीज. उनको CRO की बहुत जरूरत होती है, लैंडिंग पेजेस की बहुत जरूरत होती है. अनलाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग हर बंदे को चाहिए. एक पर्सनल ब्रांड वाले बंदे को भी चाहिए, एक बार्बर को भी चाहिए, और बड़े से बड़े स्टार्टअप लाइक जोमेटोज और इन सबको भी चाहिए. लैंडिंग पेजेस एंड CRO सबको नहीं चाहिए होता. तो अगर तुम एजेंसीज को पिच करोगे, तो तुम्हें बहुत सारे क्लाइंट एजेंसी से ही मिल जाएंगे. अगर स्टार्ट हो जाओ उनसे एज अ फ्रीलांस लिंक हो जाओ, तो मैं एक एजेंसी से लिंक हूँ, तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट है. इसे तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ. और अगर तुम्हें फ्री में लर्न करना है, तो यूट्यूब पे एक चैनल है द लैंडिंग पेज गाइज, उसको जाके चेकआउट करो. उनके सिर्फ 500 सब्सक्राइबर है, बट उनका कंटेंट टॉप नॉच है. तो जस्ट गो अबाउट इट एंड सर्च देम, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज. बाकी अपवर्क पे यू कैन गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फॉर CRO. दिस इज लाइक अ वेरी बूमिंग नीश आई वुड से, कि लैंडिंग पेजेस एंड CRO पे बहुत लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करके, क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है. सो अपवर्क इज ऑल्सो गुड प्लेस टू क्लोज अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स. दैट्स ऑल. Oh, Okay, so that's all. Now we will take some questions from audience, some rapid fire question and some questions from the chat. So there's one guy, Harsh Tiwari. He wants to ask one question. You can put it in chat box or anything. yeah, I have permission. You can speak up now, Harsh. Yes, I have given you the mic option. Hello, You can am speak I up. audible? Yes, Yeah, you yeah, are. Yes, Harsh, yes. you're audible. Thank you very much for giving me the opportunity. Actually, for someone who's just starting out, who's just pick up a skill and just made an Instagram page, made a Mm-hmm. LinkedIn page, how Okay. to how to maintain your portfolio, how to start posting on it, so that in a quickest way possible to attract some people to appreciate your Clients. work. Yeah, Yeah. yes. So, what do you do actually? What skill do you have? Actually, I'll start from today now
on only. Okay, so for example, if you are a graphic designer, I'd recommend graphic designers to go forward with Instagram. तो अगर तुम अपना कंटेंट डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे जस्ट शोकेस इट, तुम डालो अपना काम. एंड देयर सेकंड थिंग अबाउट आउटरीच. क्लाइंट तुम पे अपने आप में आने वाला. ऑब्वियसली अगर तुम रील्स एंड ऑल क्रिएट करो तो क्लाइंट बहुत सारे लोग तुम्हें देखेंगे, तो देयर माइट बी अ प्रोस्पेक्ट लीड. वो काफ़ी माइट बी वाला सिचुएशन है. टू हैव एन आउटरीच सिस्टम यू नीड टू एक्चुअली आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ पीपल. और अगर तुम उसको अपने इंस्टाग्राम पेजेस से डायरेक्टली पिच करोगे तो इंस्टाग्राम पेज वो डायरेक्टली एक्ट एज अ लैंडिंग पेज फॉर देम. वो देखेंगे तुम्हारा नाम, तुम्हारा प्रोफाइल कैसी है, तुम्हारा काम कैसा है, and they can actually judge you. So for example, if you're a graphic designer and you want to sell social media post designs, so you can go on a lot of small businesses, a lot of large businesses, and then DM them on Instagram, DM them on LinkedIn, and cold email them. हर जगह उनको मैसेज करो, एक जगह मैसेज करके रिप्लाई का एक्सपेक्ट मत करो. देखो कितना टर्नआउट आता है, तुम्हारा कैसा चल रहा है, अपने पोर्टफोलियो पे काम करो. So yeah, that's it. Don't expect conversions only from social media. तुम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को लिंक कर सकते हो अपने कोल्ड ईमेल्स में. तुम अपने लिंक्डइन आउटरीच में लिंक कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम हैंडल को इफ यू आर ग्राफिक डिजाइनर. तो ट्विटर के लिए भी सेम है. एंड प्रखर वुड ऐड क्योंकि उसको ज़्यादा Okay, आइडिया है इस चीज़ so का. see, agar you're just starting out now and you want to put more content, it's the best time. I'll say it's the best time. Why? For example, if I'm a video editor or you just or a graphic designer, let's say, whatever you learn, you could just implement it into Photoshop or Premiere Pro and you put it on your Instagram page. That's it. ये तो बहुत आसान हो जाएगा ना तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम कुछ भी नई ट्रिक सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो प्रीमियर प्रो पे जाकर, उसको इंस्टाग्राम पे डाल दो. दैट वे तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बन रहा है, तुम्हारा पर्सनल ब्रांड भी बन रहा है और तुम सीख भी रहे हो, तो तीनों चीजें साथ हो रही है. तो आई गेस दैट्स द बेस्ट थिंग दैट्स पॉसिबल फॉर यू. Uh, Thanks for the answer. All right. Okay. It was I very hope helpful. Thank Harsh you you. got the. I hope you got the answer. Now moving to next question. Uh, we have Sahil. another. Yes, Sahil, you can unmute and ask your question. Sahil Kumar, if you are listening this, please unmute and ask your question. Okay, maybe some internet issue. मीनवाइल साहिल आ रहा है तो बहुत सारे लोगों ने चैट में Yes, डाला yes. है कि Yeah, या we Yeah, आई can वाज can see रीडिंग you इन द them. uh, चैट. can you answer some question that I have? We have lot of question about how to start video editing, which हाँ. software use, what my system More requirement about are. Just yes, yes. just about how to start video editing journey and what are the requirements. Okay, so for video editing, the software that I'd recommend is Adobe Premiere Pro, or if you have a Mac, in case anybody has Mac, go for Final Cut Pro. Final Cut, both of these softwares are like industry standards for. So अगर तुम्हारे पास कोई client आता है and you work in any other software, और अगर वो तुमसे मांगता है project file, तो you won't be able to deliver that. So that lessens your chances of getting more clients. So if you work with Adobe Premiere Pro, I'm sure कि that's industry standard, so most of the jobs you'll be able to do from that. For the courses or the YouTube channels that I'll suggest to learn video editing, for the courses, go to skillshare.com. There's a whole course by Jody Vanderput. That's also on my Instagram. There's a reel, and I also have a reel with 3 YouTube channels that I personally follow, and I think they'll help you a lot. A different type of content, but they'll help you a lot. Uh, if you have an old laptop, some of them are saying that they have a lower graphic processor or something like that. I think you can start motion graphics or something like that. Go with Adobe Premiere Pro first, learn that. You might not be able to work with After Effects all that like smoothly, but Adobe Premiere Pro I guess would work in most of the laptops. Okay. I guess that's about it. Yes, Okay. so Adarsh. I hope most of you got your answer. So we have a question for Shivay, that is where we can some coherent based courses on marketing that you suggest or you have purchased or you like anything coherent based courses. Okay, so I guess you're talking about cohort based courses. So for Yes. that the मैं अपना पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा यहाँ पे. That there's a startup recently by Vaibhav Sisinti, that's growthschool.io.
उनके पास ग्रोथ हैकिंग, यूआई यूएक्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इन सब के कोहॉर्ट बेस्ड कोर्सेज है. आई विल बी ट्रांसपेरेंट रिगार्डिंग प्राइसिंग. वो 3 महीने के 15,000 रुपये है. इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट एंड यू आर अ स्टूडेंट, तो मैं वहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल लेंगी. एक होगी कि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. मतलब तुम वहाँ पे सारे एजेंसी फाउंडर्स और उन सब से मिल पाओगे, सीधा बात कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे. और तुम एज अ स्टूडेंट, उनकी उनके पास ऑलरेडी कंपनियां एस्टैब्लिश्ड है. वो सारे एजेंसी ओनर्स है जो 20 साल, 25 साल, 30 साल के हैं. तुम उनसे इजीली कनेक्ट कर पाओगे. और वो कंटेंट बहुत टॉप नॉच है एट ग्रोथ स्कूल. सो एड तुम उनके रेफर कर सकते हो. रेस्ट मैंने पहले एवलॉन, मेटा के प्रो लीग्स अटेंड करे थे फॉर मार्केटिंग प्रो लीग्स. दोज वर एज वेल कोहॉर्ट बेस्ड कोर्सेज, बट आई गेस अब वो नहीं करते. इट्स ऑल ऑन देयर ऐप आती है उनकी सीन्स ऐप, तो अब उनका सब वहाँ चलता है. सो करेंटली growthschool.io इज माई गो टू फॉर कोहॉर्ट बेस्ड कोर्सेज. उसके अलावा बहुत सारे क्रिएटर्स अपने कोहॉर्ट बेस्ड कोर्सेज निकाल रहे, तो तुम चेकआउट कर सकते हो. तुम्हें आता है. माई रिकमेंडेशन इज ग्रोथ स्कूल. Okay, I hope you got the answer. Now, Adarsh, you can unmute and ask your question. Adarsh, are you there? Others, you can type in your question. Also, for anyone whose question is not being answered, or if we by chance left that question, do DM us on Instagram. If you're serious about it, Yeah, we'll be more than happy to assist you or help you out for starting out. Or if you have any particular specific questions, even if you go and like explore Upwork and Fiverr today and then have any specific questions, come to us, DM us on Instagram, and we'll help you out. yeah. So Adarsh, there are ask a lot your of, question. या किसी और को अनम्यूट करके करना है, so they can do Yes, it. yes, Rohit, Rohit? you can yes, Rohit, you can unmute. Sir, am I audible to you? Yes, you Yeah, Yes, are. you yeah, yeah, are. you're audible. Sir, actually, sir, I am into sir coding, sir. So I have learned, sir. So I know, sir, basics of some, some languages like C++. So actually, I wanted to ask, how can I get work in that in freelancing? Do I have to post something, Regarding, some certificates over there, or do I have to do something else? That I wanted to ask. Okay, so the first thing you have to do, I guess, is go to upwork.com, because I have seen a lot of coders there. That's why I'm saying upwork.com. Go to upwork.com. Look for coders. I've seen so many app developers, web developers. So I guess there are coders as well. And go to their profile, see what they've had on their profile, what kind of social proof or what kind of portfolio they have on their profile, and accordingly you could also like put in something like that. Okay. Yeah. and also adding to this, Rohit, like right now, you right now know C++. You can upscale yourself into HTML, CSS, JavaScript, and become a front end developer. You can work on a back end developer. Basically, what the demand in freelancing is web developers and so basically, the demand in freelancing is for web developers and iOS developers. So I was recently having a talk with one of the person who wanted to start in this tech side. So go on Upwork. Fiverr I won't recommend for the tech. It's mostly for marketing and creative side. And second, focus on your Twitter profile. अगर अपने ट्विटर पे प्रोफाइल बनाओ, put out your content, put out your learnings. I believe if you are into coding, you would know about 100 days of code. So a lot of people document their journey of about 100 days of code on Twitter, and when they finish, they become such a good coder in public that actually a lot of people are ready to hire them. So that's about, you can actually be a freelance software developer as well. तो यार कोडिंग में बहुत स्कोप है एज अ फ्रीलांसिंग. बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बट आई हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड इट couple of months back. So if you are serious into it, go into front end development. There's a good lot of amount demand there. Or you can go with back end and iOS development as well. iOS app development, all those sectors. So I learn the languages side by side, why, or I should languages before. You should go it on a, मतलब पहले तो for tech it's unlike marketing and creative, so you actually need to learn beforehand before you can help other people, क्योंकि coding यार is थोड़ा ना extensive branch. For coding and tech you actually need to give in time to yourself, work on practical projects, and then only you can help clients.
द मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, इन सब में थोड़ा अलग होता है. दीज आर, इनका लर्निंग कर्व छोटा होता है, तो ये जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं. हम इनको एज स्किल्स इनको जल्दी सीख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कोडिंग. तो कोडिंग के लिए यार तुम्हें थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा अपने आप को. I hope Okay. Rohit, I hope Rohit, you got your answer. Yes, I So got Mm, it. Okay, thank you. okay, thank you so okay. much. So Babita, Adarsh, you can, unmute yourself. yes, Babita, yeah, yes, you go on, Babita. You can ask your question. Yeah. Hi, Shivay and Prakhar. Hi, 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 So hi, Babita. my hi. question is like, yeah. So I just wanted to like, I do have a four year of around experience in digital marketing, and I do have a knowledge in graphic designing. I do have a knowledge in video editing. So now I just wanted to start my work as a freelancer. So my concern, my question is like, I wanted to start Instagram page. So whether to put all the thing in one page, all the niches in one page itself, like video editing if it is there, a graphic designing for social media marketing, or everything to be put it in a single channel, a single platform, or I should categorize on the basis of niches, like email marketing should be a different page, and then graphic designing should be a different page. Like this is my concern and this is my question. No, I don't think you can make 3 to 4 personal brands like that. So you'll have to find a creative way to put them all in one page. For example, if you're doing some giving someone Instagram services, you could bundle them with graphic designing and video editing, something like that. So look for creative ways. A But I single guess page to be. yeah, a single page to put in all the things. For example, if you go to like social media marketing, I guess graphic designing and video editing comes within it, because अगर कोई Yeah. client आके पूरा bundle खरीदता है तो फिर you make designs for them, edit videos for them as well. So you could go that way with making one page. Yeah. Yeah, so And for like I'll digital yeah, marketing, so like if I'm doing Facebook ads to email marketing. So I'll tell you how. Look, that's how you can go about it. Is you need to craft your offer. कि देखो, like if you are having skills, it's always in a T-shaped skills. तुम्हारी डेप्थ में कुछ स्किल्स होंगे, तुम्हारी कुछ ब्रेथ में होगी. तुम्हें वीडियो एडिटिंग अच्छे से आती होगी, बट कोई ऐसी Yeah. स्किल होगी जो तुम्हारी बहुत Yeah. डेप्थ में होगी. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें फॉर Yeah. एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल केस, तुम्हें फेसबुक एड्स बहुत अच्छी तरह से Yeah. आते हैं. ओके, सो नाउ यू नीड टू डिफाइन योर वैल्यू लैडर. हमेशा फ्रीलांस में भी तुम्हें अपनी वैल्यू लैडर Okay. डिफाइन करनी हो, तो इसमें तो तुम As अपना in, एक्सपर्टीज, okay. I'll explain you what's a value ladder. One by one लेके जाना है तुम्हें अपने आइडियल कस्टमर को. सो फॉर इंस्टाग्राम दे वुड बी अ लैंडिंग पेज फॉर देम. ठीक है, तो उसमें यू कैन शो योर एक्सपर्टीज regarding, you can keep a title as a digital marketing creative person, anything like that which actually suits you. बट तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा सबसे पहले बैठ के कि तुम्हें करना क्या है. आता मुझे भी 4-5 स्किल्स है, बट आई एम प्रायोरिटाइजिंग राइट नाउ लैंडिंग पेज डिजाइन, एंड देन आई अपसेल देम कॉपी राइटिंग, Okay. वीडियो एडिटिंग और अदर स्टफ. ठीक है, क्योंकि आई टुक अ क्लाइंट फॉर लैंडिंग पेज एंड देन आई एम हेल्पिंग देम विद ईमेल मार्केटिंग, एड्स, एवरीथिंग आई नो. तो यू नीड टू एक्चुअली डिफाइन अ वैल्यू लैडर, पिच देम वन सर्विस जो तुम्हें कॉन्फिडेंट हो कि यार इसमें तो यू विल किल इट. तो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू विल किल इन Okay. फेसबुक एड्स, मेक योर प्रोफाइल रिगार्डिंग Okay. फेसबुक एड्स एंड अराउंड मार्केटिंग. ये नहीं कह रहा कि सिर्फ फेसबुक एड्स डालो, ईमेल मार्केटिंग भी इंक्लूड करो. थोड़ा वीडियो एडिटिंग अपनी स्किल्स दिखा दो अपनी Okay. पोस्ट में. ग्राफिक डिजाइन आता है तो ग्राफिक डिजाइन से अच्छी पोस्ट बनाओ. वंस यू क्लोज अ client for Facebook ads and you do good work, upsell them कि now see I have done Facebook ads as well. Facebook ads से obviously अगर कोई client Facebook ads चला रहा है तो उसको email marketing चाहिए, उसको कहीं ना कहीं डिजाइन क्रिएटिव्स चाहिए, उसको कॉपीराइटर पर्सन चाहिए जो कॉपी लिख सके एड्स की, जो डिजाइन कर सके क्रिएटिव्स. To define your value ladder in such a way, define your offer in such a way for your client that you offer your skills as well, and you prioritize them as well कि तुम्हें पहले ये देना है, फिर ये देना है, फिर ये देना है. So that's how you can go. Okay, so that I hope Babita got your answer, and that was our last question. So guys, if your question was not taken or you was not able to ask your question, please check out their Instagram. Also check out the Knowledge Catalyst on Instagram. We will post this recording video on YouTube, so you can rewatch it. So if you have any doubt, let us know or you hit them on Instagram and make sure you follow. So thank you for joining. Ashita, you want to say something? Yes, I do. Okay, that was a great session with you all. Thank you to our speakers. Thank you for being here.
and teaching us about the freelancing. Yeah, yeah. Thank you And for having Yeah. us. Thank you for having yeah, us. pleasure, pleasure.